10 ओवर की निर्धारित मैच यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन की योजना के अनुसार व्हाइट स्टोन की प्रस्तुति पर यूसीएल कम्युनिटी फेस्ट 2026 डे नंबर 3 यासिर 11 बने हैं रन संख्या। इस बार जोर से लगे चाटा और गेंद निकल पड़े बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। एटलेर मनतैन प्रॉपर्टीज शुरुआत से ही थोड़े अच्छे रन के साथ अपने बल्लेबाजी दिखाने की प्रयास, और दूसरी तरफ पुत्तूर पर्ल्स शुरुआत में लीग के 2 मैच खेलने के बाद मिले हुए वो अनुभव, वो सबक अब थोड़ी सी सुधार अवश्य हुए होंगे टीम पर। और इस बार भी अच्छी गेंद पैर की जड़ों से उठाए, लेकिन शॉट एक्स्ट्रा कवर से विकेट कीपर तक गेंद पहुंचने से पहले ही दोनों खिलाड़ियां अपने सुरक्षात्मक रेखा को छू चुके हैं, पार कर चुके हैं। तो ऐसे में बिल्कुल कोई खतरा नहीं। दोनों खिलाड़ियों के पैरों की जो तालमेल है बिल्कुल साफ, अच्छे नजर आते हुए। दोनों खिलाड़ियों के बीच वो अंडरस्टैंडिंग अवश्य होना चाहिए कि कब दौड़े, किस तरह से। इस बार स्लो ओवर डिलीवरी। गेंदबाज अगर मेंतोस वाली बात बनाए तो बल्लेबाज ने भी पेप्सी वाली बल्लेबाजी दिखाए। यासिन 17 रन कुल मिलाकर बिना कोई विकेट के नुकसान पर। और ज्यादातर अंडरआर्म क्रिकेट में हम 17 नंबर पर टीम के स्कोर आते ही 17 पे खतरा, कहावत काफी मशहूर है कि टीम के स्कोर 17 पहुंचते ही खतरा बन जाते हैं, विकेट गिरने की संभावना। और इस बार गेंद को छेड़े और 17 पे खतरा। कहावत अब फिर भी सच साबित होते हुए कि टीम के स्कोर जब 17 बन जाते हैं तो आगे बढ़ने के समय पर थोड़ी सी सावधानी, वो संख्या काफी खतरनाक है। तो पहली विकेट 17 पर गिरने के बाद अब एटलेर मनतैन प्रॉपर्टीज अच्छे खासी शुरुआत दिखाए हैं, लेकिन ये विकेट की गिरावट, इस साझेदारी टूटने की जो दर्द है निश्चित रूप से महसूस करेंगे, क्योंकि आरंभिक जोड़ी काफी आसानी के साथ, बिल्कुल कोई दबाव नहीं, और रनों की संख्या जितने मांग कर रहे थे उनके टीम के बाकी सदस्य उनकी निरीक्षा के साथ जुड़ते हुए। कुल मिलाकर 10 ओवर के इम्तिहान, मुकाबला 10 ओवर के होंगे। गेंदबाज और बल्लेबाजों के लिए पूरी तरह से मौका है कि छोटी ओवरों के मैचों पर जिस तरह से आप देखते हैं कि अगर एक गेंदबाज को एक ही ओवर गेंदबाजी करने की मौका मिलते हैं तो उस एक ओवर पर बने हुए गलतियों को सुधारने की मौका दोबारा नहीं मिलते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, अपने आप को साबित कर सकते हैं। अगर एक बार गलती भी बन जाए तो दोबारा उस गलती जानबूझकर नहीं, जाने अनजाने में बने हैं, इस बात को साबित करने के लिए और एक मौका मिलते हैं दूसरी ओवर फेंकने की। बल्लेबाजों को लिए भी अगर छोटी ओवर के मैचों पर कुछ चंद गेंदे डॉट बनाने के बाद विकेट गवा बैठे तो पूरे के पूरे हार के वो इंसाफ जो है वो उनके सर पर लगा देंगे, और उन्हें भी वो मौका नहीं प्राप्त होते कि शुरुआत पर अपनी वैफल्यता को बदल कर सक्सेस में दिखाने की। और इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पणमपुर सर्कल इंस्पेक्टर मिस्टर सलीम अब्बास, कोस्टल फ्रेंड्स मैंगलोर के सदस्य भी हैं।
तीसरे ओवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ। दिन ब दिन मनोरंजन दुगने होते जा रहे हैं, उत्साह बढ़ते चले जा रहे हैं। हर एक टीम भी अपने शुरुआत के मैचों पर मिले हुए ऋणात्मक और धनात्मक अंशों को जांचते हुए आप और एक विकेट, लाल बत्ती जले हैं बेल्स के। विकेट नंबर 2 बोल्ड आउट के रूप पर शिकार कर दिए पुत्तूर पर्ल्स। पहली ओवर पर थोड़ी सी ढीलेपन जो नजर आए गेंदबाजी पर, लेकिन उसके बाद यासीन और अली की गेंदबाजी, जिस तरह से मैंने कहा कि हर गेंदबाज को 2-2 ओवर गेंदबाजी करने का मौका है यहां पर, तो पहली ओवर की गलतियों को सुधारने की मौका जब मिल जाते हैं तो वो साबित कर पाते हैं। क्या कमाल के मैच आपको देखने को मिल रहे हैं। यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन प्राउडली योजना इतने बेहतरीन दिखाए हैं। कम्युनिटी के हर एक प्रतिभाओं को मौका देने की ये शपथ, ये योजना भविष्य को मद्देनजर रखते हुए अगले 10 सालों में इस परिसर के ही नहीं बल्कि जिन्होंने भी मौके की तलाश पर मौका न मिलते हुए अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पाए हैं, ऐसे लोगों के लिए है यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन। और आज तो वाकई स्टेज पर विराजमान होते हुए आप देख सकते हैं, इस मैच के मजा लेते हुए और इस श्रृंखला को अपने प्रोत्साहन दिखाते हुए सलीम अब्बास सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पनम्बूर, कोस्टल फिंस मैंगलोर के सदस्य भी हैं। और हर विभाग पर केवल एक पुलिस अधिकारी ही नहीं, बल्कि जब गलती करते हुए उनके सामने कोई शख्स खड़े होते हैं तो उनको उनकी गलती के एहसास दिलाकर आने वाले दिनों पर उस गलती को सुधारते हुए आगे बढ़ने के रास्ता दिखाते हैं। कानून के पालन के साथ सामाजिक विचारों पर भी सलीम अब्बास के सर बार बार सुने हैं। और उनके साथों साथ शरीफ उल्लाल मैंगलोर, कोस्टल फ्रेंड्स मैंगलोर के अध्यक्ष महोदय, और जितने भी कारनामे, जितने भी बेहतरीनपन, चाहे वो योजना की बात हो या अपने संस्था के साथ जुड़े हुए जितने भी अच्छे खासे बातें हैं, शरीफ उल्लाल जी जब से अध्यक्ष स्थान पर अपने आप को विराजमान किए हैं और उसके बाद हर एक योजना भी कामयाबी के, सफलता के झंडे ले रहे हैं। और उसी तरह एटलियर के इंसाफ भी हमारे साथ स्टेज पर विराजमान है। आपको भी स्वागत करते हैं। एटलियर के इंसाफ जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया आप स्टेज की तरफ कदम बढ़ाइएगा। संगठक यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन के महारथियां आपको स्वागत कर रहे हैं स्टेज पर। और उसी तरह से शकील शबा, क्रिकेट के बेहतरीन प्रोत्साहक, देश पर ही नहीं बल्कि विदेश पर भी अंडरआर्म क्रिकेट और ओवरआर्म क्रिकेट दोनों पर इनके प्रोत्साहन बड़ी मात्रा पर है। सऊदी अरेबिया पर ईस्टर्न ब्लूज के साथ, ईस्टर्न ब्लूज के हर एक वो कामयाबी पर शकील की बेहतरीन भूमिका है। तो बहुत बहुत स्वागत है शकील जी आपको भी ये शानदार क्रिकेट फेस्ट पर, यूसीएल 2026 पर। और उसी तरह से आयाज कैकम्बा, राइट चॉइस, और हमारी इस प्रतियोगिता के पावर्ड बाय प्रोत्साहन इन्होंने दिए हैं। आयाज कैकम्बा हमेशा जब भी इम्तियाज हो या सिराज जरमाल या यूनाइटेड एम्पावरमेंट के जितने भी महारथियां, उनके साथ जुड़ते हुए जो भी बात अच्छे खासे बता देते हैं तो उनके प्रोत्साहन खुलकर मिल जाते हैं। तो अयाज जी, तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं आपके प्रोत्साहन के लिए, आपके वो प्यार भरे कंधे से कंधे मिलाकर हौसला बढ़ाने वाले वो शब्दों के लिए। हम निश्चित रूप से लंबे समय तक आपके प्रोत्साहन को निरीक्षा करते हैं, क्योंकि आप जैसे महारथियों की वजह से ही इतने बेहतरीन, इतने शानदार, बिना कोई न्यूनता के साथ ऐसे झलक हम दिखा सके हैं। तो निश्चित रूप से स्टेज पर जितने भी अतिरथियां, बड़े बड़े महारथियां विराजमान हैं, आप सभी को हम यूनाइटेड एम्पावरमेंट की तरफ से, टीमों की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से हम स्वागत करते हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन, 21 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। अब अजमल को लाए गए हैं गेंदबाजी पर। देखना है कि शुरुआत के 3 ओवर, अली के 2 ओवर और उसके बाद फरवेज के दूसरे ओवर, इन तीनों ओवर पर अब 7 रन के अवसर पर बने हैं 21 रन। अजमल एक क्वालिटी गेंदबाज,
ओवर के 6 गेंदों पर भी अपनी तांत्रिकता दिखाने की काबिलियत रखते हैं अजू। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंद पॉइंट की दिशा में फील्डर बिल्कुल नहीं नजर आए, तो ऐसे में बल्लेबाज आसानी के साथ, बिल्कुल कोई दबाव नहीं, बस उनके मन में तो केवल एक सिंगल रन बनाते हुए स्ट्राइक रोटेट करने की चाहत थे, तो वो आसानी से पूरे कर दिए। अब इस सिंगल रन के बाद 22 ऑन द बोर्ड। रात को दिन बनाकर उल्लाल के समुंदर किनारे कितनी शानदार नजारे हैं। एक तरफ समुंदर की लहरें, किनारे पहुंचने की वो सुंदर आवाज, और उसके साथों साथ गूंजते हुए निकल आने वाली ठंडी हवाएं, खुले आसमान, मैदान की हर दिशा पर आपको नजर आ रहे होंगे हरे भरे पेड़ पौधे, और इन सभी बेहतरीनपन के साथ, प्रकृति के ये खूबियों के साथ, यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन के 7 दिन के जश्न त्योहार निश्चित रूप से काबिले तारीफ। आज तो तीसरे दिन आप देख रहे हैं और लंबे चलेंगे 1 तारीख तक। केवल क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के साथ अगर व्हाइट स्टोन के प्रोत्साहन आप देख रहे हैं तो कबड्डी और वॉलीबॉल पर अल मुसैन और एक्सपर्टाइज के महारथी अभी हाथ मिलाते हुए देश विदेशों में काफी नाम कमाए हुए संस्थाएं हैं। अल मुसैन जकारिया जोकट्टे के मालिकत्व पर, जिनके लिए तो कर्नाटक सरकार ने राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किए उनकी सामाजिक सेवाओं के लिए, और उसी तरह एक्सपर्टाइज के मालिक शेख जी न जाने कितने हजारों युवा शक्तियों के लिए उनके आश्रयदाता बने हैं, उन्हें सही काम देते हुए, और गरीबीपन हटाने में इनकी भूमिका तो हम निश्चित रूप से शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं। कुल मिलाकर सभी को हम शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने भी इस श्रृंखला के साथ हाथ मिलाए। तो चौथे ओवर के 2 गेंद अभी भी बाकी। दर्शकों से कचकचाता हुआ मैदान, और दूसरी तरफ महिलाओं की वो संतृप्ति आप देख सकते हैं, मुस्कुराहट देख सकते हैं, क्योंकि अगर पुरुष इस क्रिकेट के साथ मजा उठा रहे हैं, सुकून पा रहे हैं, तो उनके साथ आकर परिवार के साथ यहां पर आते हुए उन परिवारों को भी मायूस ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। इस वजह से अलग अलग स्वाद के भोजन के स्टॉल आप देख सकते हैं, फूड फेस्टिवल के नाम के साथ फूड स्टॉल्स। आजकल के पीढ़ियां जिस तरह से पसंद करते हैं, कुछ कट्ठे मीठे मिलावट के अलग अलग सुंदर नामों के कुछ आजकल के विभिन्न भोजन, और उसी तरह बच्चों के लिए भी जो छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं, उनके लिए भी बिल्कुल नाराजगी वाली बात नहीं है। बच्चों के लिए बिना कोई पैसा यहाँ पर खर्च किए अच्छे अच्छी सुविधाएं जो बच्चों को खुश कर सकते हैं, उन तमाम व्यवस्थाएं की हैं। और कबड्डी के बारे में तो आप जानते हैं, दर्शक जगह ढूंढ रहे हैं उस कबड्डी मैच देखने के लिए। ये तमाम कारनामाएं आपके सामने पेश किए हैं यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन। 4 ओवर की समाप्ति, 25 रन, 25, 6.20 पर ओवर। अब तक 6.20 के रन धारण। अब देखना है कि बचे हुए 6 ओवर कितने रन बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे।
3 विकेट गिरने के बाद चौथे विकेट के साझेदारी पर नईम और आरिफ की जोड़ी। आरंभिक क्रमांक के तीनों खिलाड़ियां महबूब, शाहिद और राशिद के निर्गमन के बाद स्थलीय परिसर के प्रतिभान्वित खिलाड़ी है नईम। तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए तो ये एक इम्तिहान, जिस तरह से एक ग्रामीण प्रदेश से एक खिलाड़ी को आईपीएल जैसे मौका मिल जाते हैं, उनकी प्रतिभा को साबित करने के ऐसे एक मौका, प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, मानो कि उससे भी बढ़कर है ये आपके लिए। क्योंकि देश विदेशों में लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े उद्यम क्षेत्र पर, सामाजिक क्षेत्र पर नाम कमाए हुए बड़ी बड़ी संस्थाओं के मालिक आपको देख रहे हैं। क्योंकि आने वाले दिनों पर अगर इसी तरह की प्रतियोगिता और आपके सामने हो तो उनके टीम के लिए आपकी जरूरत है या नहीं, ये आपके काबिल ताज देखने के बाद वो तय करेंगे। और इस बीच मिसफील्ड, फंबल फ्रॉम द फील्डर, 4 रन, गलती से 4 रन। आरिफ जगह ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन फील्डर ने कहा कि आप क्यों मौका ढूंढ रहे हैं, हम ही कुछ गलती से आपके चाहत वाले 4 रन दे देंगे आपको। और बार अच्छी थी, लाइन अच्छी थी और इज्जत के साथ गेंद को रोके, एक सिंगल रन 3 विकेट गिरने के बाद। अब तो यह जरूरी भी है कि कुछ ओवर तक इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाए और बिना गेंद डॉट बनाए रन भी मिल जाए, क्योंकि रन अगर कमजोर हो तो विपक्षी टीम के लिए यह अच्छी बात बन सकते हैं। केवल पार्टनरशिप ही नहीं बल्कि रन बनाने की वो कला भी आपके पास होना चाहिए। आपस पर दोनों खिलाड़ियां बात करते हुए, मानो कि अगर आप हर ओवर पर 10 रन बनाना योजना बनाते हैं, 10 रन की प्लानिंग है आपको, तो ओवर को 2 टुकड़े कर दीजिए, 3-3 गेंदों के हिस्सा बनाकर। आरंभिक 3 गेंद पर 5 रन के टारगेट और उसके बाद 3 गेंद पर 5 रन के वो मांग, वो टारगेट। अगर इसके बीच 3 गेंद पर अगर 6 मिले, 7 मिले, तो उसके बाद वाले जो 3 गेंद के हिस्सा है वहां पर इस रन को मत जोड़िएगा, वो बोनस वाले रन बनेंगे। उस 3 गेंद पर फिर भी आपको 5 रन बनाने की उस अंदाज के साथ खेलना होगा, तब जाकर पार्टनरशिप और टीम के स्कोर दोनों भी बढ़ जाते हैं। कोशिश अच्छे वहां पर, लेकिन आखिरी मौके पर जिस तरह से पक्षी के पंखे जिस तरह से बिखर कर दिखते हैं, उस प्रकार दोनों हाथों को फैलाकर गेंद तक पहुंचने की कोशिश वहां पर पुत्तूर पर्ल्स के खिलाड़ी की और एक सिंगल रन। और इस बार बल्ले से गेंद टकराने की आवाज सुनाई दिए और उसके बीच बेल्स भी लाल सिग्नल दिखा रहे थे, लेकिन वो जश्न नहीं नजर आ रहे हैं विकेट कीपर के चेहरे में। इसके मतलब बिल्कुल साफ कि मौका उन्होंने गवाए, उनके हाथ लगने के बाद फिर स्टंप्स पर गिरे थे गेंद। तो पांच ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 33 रन, 33 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। तो अब समय है ड्रिंक्स ब्रेक। एक नएपन दिखाकर, पुराने शैली की उस गाड़ी पर आज के नएपन मिलाकर ड्रिंक ट्रक अब मैदान पर प्रवेश किए हैं। तो थोड़ी सी पानी पीकर अपने शरीर को भी थोड़ी सी राहत दे दीजिएगा, गले थोड़ी सी गीले कर दीजिएगा। और जब 6वां ओवर शुरुआत हो जाएंगे तो वीक्षक विवरण पर भी हम बदलावन करते हैं। सतीश हनुमान फिर एक बार हाजिर होंगे। जी हां, राशिद संकोली के भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अब इसके आगे राशिद संकोली के अपने शब्द इस्तेमाल करेंगे। युवा वीक्षक विवरणकार हैं, इंग्लिश और कन्नड़ा दोनों भाषा पर अपने वीक्षक विवरण सुनाते हैं। तो आइए आज सुनते हैं राशिद संकोली की आवाज में भी। और शुरुआत के 5 ओवर पर बने हुए रन संख्या 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर
अब बचे हुए 5 ओवर थोड़ी सी और रफ्तार दिखाना होगा, नमूना बदलना होगा रन बनाने की, थोड़ी सी विस्फोटक मनोभाव, या आपके चालाकी से, आपकी सामर्थ्य से, आप जिसी भी रूप अपनाओ, बस आपकी टीम के लिए तो रन चाहिए। पुत्तूर पर्ल्स रन की तलाश में, और दूसरी तरफ एटलेर मन्नतेन प्रॉपर्टीज हर कोशिश को पानी फेरने की योजना बना रहे हैं। लेकिन अब तक 5 ओवर की जो आधे हिस्से जो खत्म हुए हैं गेंदबाजी में, अब तक तो अच्छे खासे नियंत्रण पकड़े हैं, विकेट भी 3 मिले और रन भी 33 पर रोक लगाए हैं। इस मैदान में तो हर एक टीम हर ओवर पर लगभग 9 से 10 रन ये डिमांड करते हैं, मांग रखते हैं। लेकिन अब तक 33 रन, 6.50। आइए देखेंगे कि अगले 5 ओवर पर कितने रन बना पाएंगे। तो माइक्रोफोन पर अब रशीद संकुलिके की आवाज होगा। युवा वीक्षक वेरनकार एक अच्छी समझ, शिक्षण और प्रतिभा दोनों को भी मिलाकर अपने शब्दों को इस तरह से वो फैलाए हैं कि सुनने वाले के कान काफी सुकून प्राप्त करें। इट्स ओवर टू रशीद संकुलिके। थैंक यू। Thank you, Star Nawaz sir. It's been a pleasure to be part of Whitestone United Cricket League. A week-long cricket carnival, volleyball and kabaddi in this sea ground Ullal. So 34 for the loss of 3 wickets. So the over number 6, which is beginning from Shafiq, already has bowled a delivery, second delivery which is coming a little bit like a short pitch one, but batsman couldn't manage to take advantage of that delivery. So it's a dotted one. Scoreboard is having 34 on the board. Oh, there's a big appeal, but certainly umpire is unmoved. So it's going to be one more dot delivery. Dot balls are much required here. Atelier Manatain, they're not going to be worried. They are in total control of this game. With every passing dot deliveries, the pressure is being built on the opposition. Oh, swings and again misses. One more dotted delivery. I think the batsmen need to try something different. It's just going for the big ones, but not at all making any connection. Atelier Manatain, they are just loving in this game because the batters are themselves making the mistake. They're not even trying to get the singles. They're playing plain dotted deliveries, which is just helping the bowlers. Oh, once again, slower one. Nicely used there from the bowler. Could be in trouble if the throw was on point. In fact, that's an overthrow committed. They're going for the run as well. Second completed. Now, this is a mistake. They are certainly going to be not happy with Atelier Manatain. They need to be very, very careful in the fielding department. Even though they have done a great job in the bowling department so far. Scoreboard is having last one more delivery remaining from Shafiq. In the 5 deliveries which he has bowled so far, he has just conceded 2 runs. In total, 3 runs came in this over for Puttur Pearls. One in the form of Bice. Oh, struck that one nicely into the deep square leg region where fielder is present. He's got a long way to throw that one. This is a very big ground. But still, whenever some batters are playing in the middle, it almost seems like this is a small ground.
So 3 wickets which is down for team Puttur Pearls. They still got a batters. They still have good batters remaining. Even yesterday they shown some wonderful performance. Even their number 8 batter coming into the middle, especially the batters who have been promoted, they were coming in the number 8 position. But now they have already given Rashid, who came in at number 3. In yesterday's game, yesterday night, he had made his way into the middle at number 8 position. But today he's been given a batting order promotion, which I think certainly did not work out, because he just scored 2 runs after facing 4 deliveries. And Naeem, he's been playing a very slow and steady innings along with Arif. Arif, he has played so far 5 consecutive dot balls. This time, one more dotted delivery, consecutive dot balls, which is coming in for team Atelier Manatain. Atelier Manatain, they are just in control of the game in this first innings, but we have seen Puttur Pearls bat very well in yesterday's day. Oh, struck that one nicely. Is it going to be the start of the fireworks here for Puttur Pearls? This is the first one coming in from the bat of Arif. This is a big one. He's already scored a boundary, but this is the first maximum for Arif in this innings. He is a capable batsman. He is definitely one of the most capable batter in the side, and showcasing why he is one of the capable batsmen. So scoreboard, which is having 2 deliveries completed, already has got runs of 43 on the board. 43 on the board already. Oh, played in the air, caught behind. Wicket-keeper makes no mistake. Taken comfortably. Puttur Pearls. One more wicket which is walking back to pavilion. Arif, this is going to be a big blow. After hitting a maximum, tried to go for the one more big one, but couldn't manage to get a thick edge, and the wicket-keeper takes it finally. Missed timing, I would say, because Puttur Pearls batters, they are now feeling that pressure after playing those 5 to 6 dot deliveries in the previous last 2 overs. Shabir, in his previous over at over number 5, he had bowled a very good line and length, even though batters were able to get 8 runs out of that over. But still, but then Shafiq came into the bowling mark at over number 6, where he bowled 3 consecutive dot deliveries to Arif, which has, I think, put some psychological pressure for team Puttur Pearls batters, and that has been shown here rightly, with the batter going for the big one, and in the very next delivery, once again trying to go for the big one and making the mistake. Here comes one more delivery. So the incoming batsman, new batsman, Fayaz in the middle. Fayaz in the middle. Scoreboard, which is having a total of 43. Puttur Pearls, they're slowly building innings, because there's still got to be 3 overs remaining after this over. Oh, what a shot! What a shot! Just a pure and sheer timing on that one. And he gets all the way to the distance. Now that maximum is going to take the scoreboard moving on to 49. This is a good total, but it's a fighting total on the board. But they're still going to have those 3 overs still remaining. And if they can manage to get anything near to 75 plus on the board, 75 to 80 runs on the board, is going to be good enough total on the board for them. Puttur Pearls in yesterday's day against Whitestone Warriors, they had lost 5 wickets for just 25, and then Naeem and Rashid, as well as I think Arif, who put a good stand, good knock on the
middle, and then they just managed to get 93 on the board at the end of, in fact 89 on the board at the end of that innings. So that's the kind of batting required here. 49 on the board after the completion of one more good over. But I think this is the first good over for after a long time for Puttur Pearls, because they got 12 runs from this over, 2 maximums, even though they lost a wicket, 3 dot deliveries. And more than big hits, I think, which is required here for Puttur Pearls, along with the big hits, they need to play sensible cricket. They need to play for the singles and the doubles, which is very, very important. If you can manage to get at least a run from every delivery, you could manage to get 60 plus on the board. So 49 on the board. This is a 10 overs format, not just the big hits which is required. If it was a 5 overs or maybe a 6 overs format, that would have been the right mindset from the batters. But it being the 10 overs format, you need to have that patience and the calm and composed nature. So Parvez brought into the attack, the captain of the side, Atelier Manatain, concedes a single on his very first delivery. Parvez once again takes his time. I think even before the start of the match, at the tossing ceremony, Parvez had mentioned that bowlers are going to get the advantage, and this is what he was mentioning. Under the lights, you cannot go for the timing strokes. You need to have power behind the strokes, not just the timing, because it's not going to clear all the way. And it's one of the longest part. And I think Satish sir is also going to join us here in the comm box. So yes, I think he's already very tired for the day. It's a long days. Today we are having 7 matches in total, and yesterday we had 6 matches. And the 10 hours match is always taking very long, and it's also very difficult for the officials as well. The on-field umpires, they're also having a lot of difficulty. The job which is of umpiring is one of the most difficult jobs in cricket. Yes, and Bilal, who was part of the commentary box, is also departed to his hometown, Udupi. So he was a fantastic voice behind this tournament in strength language Kannada over the last 2 days. Parvez once again bowls. Oh, this time batsman just swinging almost a full length delivery, maybe close to the Yorker length, but couldn't manage to get the right contact with the ball. The timing, what is required, along with the power. But Parvez is a clever bowler, always trying with the different variations. Parvez takes his time. Being the captain of the side, Atelier Manatain, has got a lot of responsibility on his shoulder. Oh, swings, and this time inside edge. There could be a direct hit which is coming. We are just waiting for the square leg umpire signal. Yes, it's going to be referred because it's a close call. And square leg umpire has asked the help of the third umpire. And the third umpire is going to review that decision. So it's out, which is a signal coming from the third umpire. A very easy decision for the third umpire. I think the on-field umpire, he was just hesitating. He wanted to make sure the double confirmation from the third umpire. That's why he referred it to the third umpire. And a scoreboard which is having 50 on the board. 50 which is up for team Puttur Pearls. They're always having difficulty in the first 5 overs. But then in the last 5 overs, they're definitely making a good comeback. Even in the
yesterday's day, we have seen that they are very great at making comebacks. And the new batsman walking into the middle. So Nashwan into the middle, number 7 player, just see number 7 player. So the ball which is going into the short coverage, and now a field fumbles in the first attempt, but no damage has been done. The batters, they are not going to risk it because already they have lost 5 wickets. So the over number 8 which is in progress. Parvez takes his time. Oh, swings, and this time again the batsman misses the timing. Gets a single added between the wicket in the form of leg by though. So the scoreboard which is going to have one more run added. 52 at the end of over number 8. So the ball after the completion of 8 overs, scoreboard which is having 52. So 52 runs. So the bowler Naufal is being introduced into the bowling department. Naufal is bowling his very first over. So the first delivery wanted to go for the reverse, in fact the switch hit, but couldn't manage to time the delivery. Not an easy delivery at all, especially under the floodlights, playing such innovative strokes. Not an easy job at all. So 52 on the board. So the bowler Azmal Ajju is being introduced into the bowling mark. Oh, the full toss delivery. But batsman again fails to take a full advantage of that full toss. Or in fact, they could have been opportunity at the non-strikers end. But they are playing it very safe. Atelier Manatain, they know more than the wickets. They need to restrict the runs which is going into the opposition's account. Especially the extras. Every single run is going to be very valuable for team Atelier Manatain because they have got the first half of the innings very much in their control, but at the second half of the innings, so far Puttur Pearls, they are showing a good fighting back spirit. Oh, that's gone. Comfortably done right through the block hole, right on the money. So the wicket which is falling, wicket number 6, walking back to pavilion. In fact, wicket number 7 which is walking back to pavilion. So 7 wickets which is down for team Puttur Pearls.
And a request for the next match, Team Bava Suratkal and Saskco United Paduvidri. Team Bava Suratkal and Saskco United Paduvidri, please complete the signing procedure. Team Bava Suratkal ಅದೇ ರೀತಿ Saskco United Paduvidri ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So 3 balls which is completed in this over from Azmal Ajjo. So far has only conceded a single run, which is a very good bowling, especially coming in the penultimate over. This is the over number 9 which is in progress. So there's going to be 9 deliveries to be precise remaining in this first innings. Oh, that brilliantly bowled. Again, he's trying to go for that same previous delivery which he bowled at the block hole. That's a good thinking from the bowler because he got a good batsman on the previous delivery. And whenever there's a very new batsman facing his very first delivery, he's going to defend it. So it's a right mindset coming in from the bowler, Azmal Ajjo. Seems very experienced in the bowling department. So far has completed 4 deliveries, just conceding 2 runs in this over and also getting a successful wicket. Oh, that's going to be a beamer. Straight away umpire showing that it's a beamer. I think trying to bowl that extra quicker, couldn't manage to grip the delivery at the last moment at that releasing point, and the ball just slips out of the fingers and straight away it's a beamer call from the umpire. So 1 more run added into the accounts of extra, and it's going to be a golden opportunity for the batsman because this is a free hit delivery. So the signal coming in from the main umpire. No ball free hit which is going to be in progress. If Puttur Pearls can get a big shot in this one, that's going to be bonus runs. Wide is a call from the square leg umpire straight away. So the free hit which is continuous is trying to bowl that first bouncer but couldn't manage to keep the ball right in the legal area of play. Ball which is going above the head height. Straight away umpires are saying it's going to be a wide. So no ball free hit still is in progress. Oh, that ball bowled away from the off stump. Wide again, call from the umpire. 1 more into the account of extra. Now this is pressure. 1 delivery which is slipped out of his hand, but then he's trying to make sure that he's not going to be punished for that delivery. He's bowled in that process 2 extras. So that 2 more extras for just trying to correct that 1 mistake. So Ismail is a man who is on the striker's end. If he can manage to get, is a number 7 batsman. If he can manage to get 1 big shot, he's going to take team Puttur Pearls to a good total. Already they got 57 on the board. Played into the onside of the wicket. They should come back for the second. I think they're going to come back for the second. And again the bowler making the mistake in that collection. This is, I think, definitely the pressure. 1 mistake. Sometimes most of the bowlers who are very inexperienced, after making 1 bad delivery, they are almost losing their rhythm. And they need to make that, they need to accept that mistakes are going to happen. If they can manage to continue in that same mindset where they were bowling that first 3 deliveries, they're going to be a very good successful cricketers. Cricket, more than the skills, it's the mindset and the psychology behind the player. Oh, this is going to be 1 more overthrow, but there's a right backup in the place, so doesn't get any extra damages from that overthrow committed. So single added, scoreboard is having 60 runs. So 60 on the board. 60 runs are definitely a good total after having so much of setback in the starting overs. 9 overs which is completed.
Even though Asmalaju bowled plenty of extras, he's only conceded 8 runs in that over. Even after bowling that no ball free hit deliveries and then bowling 2 consecutive extras in the form of white. But he finally managed to stop the batter from getting more than singles. He just kept the batters very quiet, even though bowled the extras. So for the final over, new batsman being introduced into the bowling department. For the final over of the first innings, Shafiq brought into the attack. Shafiq, I think, one of the owner choice players of Atelier Manatain. Oh, swings, and this time he is not going to get any runs for that. Under the floodlights, playing that switch hit or the reverse shot, it's not an easy thing. Shafiq once again takes his long run up. Oh, that's a good delivery, very good delivery. Balled rightly on that line and length. Perfect usage here from Shafiq. In the death overs, he's trying to bowl all the different variation deliveries because he knows that batters are going to be trying for the big one. Scoreboard is having 61. 61 runs on the board. Puttur Pearls, they are going to be in a comfortable situation because under the floodlights, even 60 plus is going to be a good enough total. If you can manage to get that first 4 overs in your favor, if you can especially take the wickets of the opposition's good batters. The 2 bowlers, they need to do the job early in the second innings for team Puttur Pearls. Oh, batsman just swings blindly. I think mostly did not see the ball at that last moment when he was swinging for that delivery. So just that not a proper connection carried into the mid-wicket area, and scoreboard which is having one more run added. 12 on the board. 62 on the board. In fact, a little bit corrections. Oh, swung that one. And he got a comfortable distance for that. I thought for a moment maybe he is not going to get a distance for that stroke. But played that one comfortably. Even in the replay you can look at that one. Perfectly watching the ball till the end and then playing that stroke. And right from the middle of the bat. Perfect connection. Perfect head placement before playing that stroke. That's what required, especially under the floodlights. Even if you look at the batting of Usman Patel, who is playing from the side of Whitestone Warriors, the head position is always on point, very accurate. And also the hand and eye coordination, which is very important. Oh, that's gone in the non-striker's end. Leg by signal from the umpire. 1 run added, but in the attempt of going for the second, I think the batsman at the non-striker's end did not see the bowler having the delivery in his hand. So the final delivery of the first innings remaining, final ball remaining, Puttur Pearls, they're going to be looking for that any runs if they can manage to get. So the new batsman Sinan into the middle. Oh, slower one. This is intelligent bowling there from Shafiq. And that takes a lot of courage in order to bowl a slower one at the last delivery of the over. And Shafiq done that perfectly. And this is why captain of Atelier Manatain has kept him for the death over, the final over. It's always a difficult job because the batters are very much in the aggressive mood, going for the aerial route always in every delivery. So 69 on the board in total for Puttur Pearls.
and they're giving 70 runs target for team Atelier Manatain. This is going to be challenging because under the floodlights, anything above 60 going to be a good total, because even ball to ball chase, if the bowlers can bowl without the extras, if the bowlers can get those wickets very quickly in the starting overs, they can definitely manage to. So 70 run target for team Atelier Manatain. So yes, after the short break, the chase which is starting here from team Atelier Manatain, and the changes here in the commentary box as well. And it's my pleasure to share mic with one of the most lovable voice here in South Canara district, not just the South Canara district, even he was invited for the ISCL as well, but couldn't make it this season. Hopefully next year he is going to make it to the ISCL as well. So changes here in the yes, as well as the recently conducted tournament. I think this season, which is one of the marquee tournament which has taken place here in the Bangalore, which was telecasted in that international live telecasting, sports telecasting app, the fan court,
And in that tournament as well, Satish sir did a great job of commentary. So it's a pleasure having him here in the UCL, United Cricket League, which is proudly presented by Whitestone under the great United Empowerment Youth Association. So changes here in the commentary box. Over to Satish sir. So thank you so much, Rashid, the one more very young and very talented commentator here from Ullal. The chasing which is started here, the first ball itself played it very exquisite extra cover drive and couple of runs which is completed. Not a big total to chase down here for the team. And Mannate, the bowlers did a great job to restrict their opposition for just 60. 9 runs, and they set a target of 70 to win this match. And opening batters already they came into bat, they started their journey. The batter are in the middle, Farhan and Rauf. Farhan will going to take the strike right above the wicket. Balls this time appeal for like before wicket, but umpire is unmoved, rightly so, because of height of the delay. Now they're taking the review straight away. Now they're taking the review straight away whether the ball is going to hit the stump or not. Shuffled across the line of the delivery, and umpire have to see that whether the ball going to miss the leg stump or it is the ball going to hit the stump. That's what they need to see here, and wait and see what could be the decision from the third umpire. So excellent delivery. The batter absolutely flum in front of wicket. I just mentioned about is shuffled across the line of delivery. This is one of the problem for the batters, where he absolutely doesn't know where you are standing, and once you are shuffled across the line of delivery, you are finding himself right in front of leg stump. Even the ball is pitching in line and hitting below the knee. That means that ball going to hit the midland leg stump. That's been a great decision from the third umpire as well. So it's a 3 for 1. This is what the started team, the Pearl City wanted. The Puttur Pearl. The man with the name which is derived Putturu, of course, which is a man. The name which is originated derived from Mutturu, and of course, why they are calling that Pearl City. Rich in agricultural. Of course, some monuments we can see, the historical monuments in Putturu. The umpire saying that the impact player is coming to the middle. The new batter is the impact player, then, and wait and see how he'll going to make an impact here. The bringing the impact player in the power play over. We're going to do the damage here, wait and see. Rifaq, the batter, nicely negotiated. Just roll of the wrist which just comes into play. Nicely played, because the ball once again targeting the midline leg stump. Just waiting for the ball to coming into his bat, and just a roll of the wrist to pick up a single for the impact player. And Rifan is off the mark. 4 for 1. Fayaz. Balls again, lovely delivery, played it gently down to mid-off range, and lovely calling, lovely understanding, no hesitation.
After that, played the soft hand. The batter is calling his partner for the single run. This is a good cricket. Farhan fixed off a single. Rifan will going to take the strike. Fayaz bowling away from us. Lovely delivery right on the block hold. Need to give some respect for such kind of deliveries. Stretching his front foot. Head is still. And almost it is a copybook style of defensive stroke played back to bowler. And one first over which is completed. Good one from the point of team Puttur Pearls has got one wicket in this over as well. After completion of a first over, chasing a total score of 72 to win this 70 to win this match. The scoreboard is 5 for 1. It's going to be a great start here from the bowler Fayaz. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಡಗೌಟ್. That stage which is meant for the chief guest, the dignitaries. Of course, the arrangement which is made for the players to have a seat in dugouts. The seat arrangement is made for players very respectively. It's 5 for 1. The bowler is brought into attack from the far end. It's going to be very interesting to see that we'll going to bowl the second over. It's very important for the team Puttur Pearls that they have to keep the tight line and length. The impact player will go into face. Sinan brought it that and he's lofted that one into the long off boundary for one bounce into the fence for 4 runs. Fantastic struck. Just have a look at the premeditated, isn't it? Just making a room to play the shot and stretching his, of course, he's getting his front foot out of the line, transferring his weight onto the back foot and lofted that one handsomely down to long off boundary for 4 runs. Such a quality cricketing stroke you can see here from the batter Farhan. Sinan is not an easy bowler to take for any batters, but only the brave and gutsy batter will going to do the job here. And more than anything else, some excitement which is in Kabaddi court. More than 1,500 viewers watching live of that Kabaddi match. Oh, well pitched up delivery. Lovely use of the short pitch delivery. Well directed, almost over the chest level of the batter. Fantastic delivery. And Sinan the bowler, is well known for his fast bowling. Excellent career he's got with the fast bowling. Here comes. Maybe he's just lost his rhythm while he was going towards his run up. Loves to bowl the quick deliveries. Charging in from the far end. Again Farhan lofted that one. It is going to be one more ball. Wait and see. Yes, it does. You can't collect the ball after one bounce because the wicky ball is a bit hard in the nature. Once the ball is landed to the ground, the ball will go into the fence easily. Again, this is one of the technique we can see that batter how he is hitting the ball. He's almost stretching. He's almost getting his front foot out of the line every time. This is some different technique from the different kind of batters. Loves to do that. So I don't think it's going to be a bad thing to do when you are playing the power play overs. They know exactly this is one of the safest stroke to play in the books. When you play that one long on and long off, when there is long on, is not there. This is a highly quality cricketing stroke, I want to tell you, because once he hit that stroke on the long off region, the captain kept one fielder in the long off and he just made an empty into the long on, and quickly realizing the Farhan that is a long on which is inside the ring, and choosing that area. Very good presence of mind here from the batter Farhan. It's 13 for 1. Hitting the bowler like Sinan, you need to be brave enough. They're going up, absolutely right. Why not?
Sinan back with the delivery, which is batsman wanted to go for the cut shot. And have a look at the sportsman spirit of the batter. You need to appreciate, he's not really looking towards umpire. He's quickly going back to his dugout. This is what I want to see, the sportsman spirit from the batters. But great catch taken by the wicketkeeper. It's not so easy. Standing up for the fast bowler. Naeem, the wicketkeeper, just remember the name. He's a local boy, always the boys of Ullal, they are very brave, because brave lady Abbaka is from Ullal. The queen were fought against the Portuguese. They're brave enough. It's not easy to stand up in the stumps and keeping the wicket for the fast bowler and taking the catch with a big reflection without having a glove. The most of the matches we are seeing in tournaments for the hard tennis ball, the wicketkeeper just protecting their hands with a glove. But with the bare hands taking that catches like this has been outstanding. Naeem with the jersey number 12. This is what the team is. A team Pearl City wanted. Puttur, early breakthrough. They got a wicket. 2 wickets back in the pavilion. 13 for 2. Here comes Sinan. To the new batter ball, which is Kaplo. Lovely cut shot. Played it in between Bucket Point and Cow Point. It just split the 2 fielders. Picked up a single quite easily by the new batter Yasin. As coming as a number 4 batter for the side. 14 for 2 now. 56 required now from 49 deliveries. Still, I think the very much match is in balance. Full toss, swings it away. Down to square leg region. No need to run for that. It's absolutely easy fix for the batter. You can't do the mistake. Sinan bowled the full toss. The batter, in fact, the batter will going to take the advantage of that one. And with that boundary scorer now moves on to 18 for 2 after completion of over number 2. They're going exactly 9 runs per over. Just one mistake which is did here in the last delivery. Of course, 3 quality cricketing strokes we can see in that over. The first 2 quality cricketing stroke played into long off and long on by the batter Farhan. He's back in the pavilion. The 2 overs completed, 18 on the board. The equation still is favouring the chasing team. 52 to get from 48 deliveries. Team Bava is getting ready for the last match. Signature is which is going on. Saskco United Padubidre is ready for the last match of the day, number 3. Team Bava, of course, under the coaching of Rahim and even Musba is one more legend player of Underarm cricket behind this team, Bava. Played it down to extra cover, not for run. Rahim is a man behind Team Bava as a coach, the very senior, the player and very good cricketer and a good coach as well. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಡಗೌಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Again, misfield. This absolutely sloppy fielding by the fielder. The ball is running towards the deep extra cover region. He stops the ball by using his feet, but ample time for the batter to complete a couple of runs here. Not a good piece of fielding there by the fielder in Cow Point. Of course, in the under floodlight, you need to be a little bit
watchful, and it's not so easy condition for the fielder, but not acceptable. You need to deal with all these things. You know exactly you are playing under floodlight. Again, delicately played off the back foot. Reading the slowness of the delivery very well. They place it down to gully region for a single. Rahim being the manager of Team Bava, and Musba, the coach for the team Bava for the next match. Lovely Yorker and delivery, negotiated very well by the batter. The last moment, getting his bat into the line of the ball, denying the Yorker and delivery of the bowler. Fayaz has been outstanding. Right above the wicket balls. This time up and over. Not really, didn't quite timed it properly, but good enough to get that one into the extra cover region. The three fielders behind the ball, but one of them will go to get that one, and even they're getting third run here. Lovely running between the wicket. Between these two, once again, their advantage of playing in the power plays. Once you get past the infield, they will go and get some runs here. So one more over completed after completion of over number 3. It's 25 for loss of 2 wickets. 25 means another 45 runs required for the victory in 42 deliveries. Equation suddenly favoring the chasing team. Manatain properties are looking in driver's seat of winning this match, but you can't say anything in cricket. You cannot underestimate the lows totals. If you see that it's going to be a low total to chase down, so many witness, so many stories we can see in this, especially in the particular cricket tournament. The last 2 matches is a low scoring encounter. Even 65, 70 runs, which is well depended by bowling well. Even 61 is also well depended. Still the team of Puttur Pearls has got opportunity to bounce back. If they wanted to bounce back, I think the best option to pick the wickets in each and every over to put some pressure. Bring the new batter in, the ball to the press leg, the right time for bowler to tighten up the screws. Once a new batter coming into the middle, don't let the partnership going to build up. Any partnership of 15, 20, 25, it's not so easy to depend a total. Not to get the partnership going. So far this batter looking so good after they lost 2 wickets very quickly. They lost the wicket number 2 at the score of 13. Now it's a 25, means it's a 12 runs partnership already between these two. Spin bowler in attack and played it nicely into the square leg region for an easy single by the batter Yasin. The impact player, still he's in the middle. Rifaq. Definitely wanted to make an impact, isn't it? The spin bowler, Naheem, the great all-rounder, good batter, wicket keeper, and then very good spin bowler. Now, Naheem is a key player for the side. You know exactly. So wicket number 3 is falling here. One more back in the pavilion. Just like I mentioned about Naheem, the bowler who got opportunity here to come and bowl, and he just got a dismissal in the right time. It's 26 for loss of 3 wicket. This is what I'm just talking about. If we wanted to depend this totally, how to pick the wicket. And Naheem is a man who's produced a vital breakthrough for his team. What a fantastic cricket tournament is in progress. United
Empowering Association registered. The Whitestone United Cricket League 2026 is under progress. The community, the first, which is made a remarkable history here in Ullal, as 7 days of the festival of not only the cricket but kabaddi, volleyball. Everything is under one shelter, even the food festival. To make this condition is absolutely electrifying and festival. We can see that all the children's, women's, senior citizen, everyone is coming here and enjoying this beautiful the cricket tournament. Here comes Naheem. Balls played it very nicely down to long off revision for a easy single. With that single score moves on to 27 for 3. I request all the players of Saskco United, Padubidri, and 2 players have to complete the signature. Please complete the signature as soon as possible. Once again, they're going for the quick single here. Good running with the wicket, good understanding, no hesitation. Now fall the batter back on strike. In fact, a player back into the hut. Naheem. Ball strikes that one along the ground down to long on region for a easy single. Tried to york the batsman Naheem, but well negotiated by the batter. Now fall to pick up a single then, and score moves on to 29 for 3 now. The slow cricket is going on here, not like what we witnessed in the morning till the evening. We witnessed some big sixes, lovely square cut, played it down to deep cow point region. Yasin is looking so good so far. And one more over completed. Naheem is got a successful over, got a 1 wicket in this over. Completion of over number 4 is 30 for 3. You are watching prestigious Whitestone United Cricket League 2026. The community passed. Special thanks to Hana Soft Drinks, which is available here in our food court. They are giving some opportunity for the spectators with the buy one get one free. Even they are producing energy drinks as well, spreading their wings all over the South Kendra, even throughout the India, even outside the India as well. It's become more popular, the Hana drinks. They are the one who has contributed for the success of this cricket tournament as well. One of the most popular beverages. They produced the very quality drinks, soft drinks, and energy drinks, especially for the players to increase their energy for the 7 days of this cricket tournament. 30 for 3. Here comes the first ball. Nicely played it one to square leg region. Lovely improvisation. The Yasir is looking so good so far. As well controlled and when much focused innings here from Yasin. 30 for 3. And one more partnership will started to build up here. Yasin is batting on 12 so far. Again, Yasin plays it nicely down to backward point region. They're going for the quick single. The fielder at backward point region, not that much of quick enough to stop the single from Yasin. 3-3-3 we can see in the scoreboard, all Nelson. The 3 threes in there, and even you get 5 threes because the 37 needed from 34 deliveries. Again, wanted to go for the expansive drive. Doesn't get that much of contact in for now fall. But not ideal delivery. I want to tell you the bowler is just survived from that ball.
The bowling to the legs of the batter is always asking for trouble. Rashid, the bowler, who tried to bowl that delivery is almost in the mid-line leg stump. This time, lovely shot, sweet sound. We can hear that. Played it right from the middle of the bat down to deep long on region and direct it, but no question of any extra run. Naufal, the batter, with the jersey number 18. In the last 3-4 days, I am watching some jersey numbers in this particular tournament, and most of the players loves to wear this jersey number 18, 1-8. It's always a very energetic number. Wearing that jersey number will go into some kind of inspiration in your body. The run machine Virat Kohli, the back on form in one-day cricket, back into the form. But today India lost their last and final T20 against New Zealand, but still they are clinched the series by 3-1. $35 scored and 35 required. Half of the job completed, have to complete another half of the job. Again, wanted to go for the pull shot, wicketkeeper behind the stump. Up stopped, no runs scored, and drinks which is called here after 5 overs. It's 35 for 3. This is very interesting. See that 5 overs completed and half of the job is done. Another 5 remaining, another half of the job is required. That means 35 needed in another 5 overs. 30 ball, 35 runs required for the victory. And now the drinks trolley is coming to the middle. And again, the man behind this drinks trolley. Of course, after Nawaz, Azhar is along with his partner is bringing the drinks break here for the players and umpires. So drinks trolley is in the middle after they're getting that drinks break and trolley which is coming out of the ground. What a fantastic arrangement is made by the team United Empowerment Association, registered under the great leadership of Siraj, Irmal and Imtiaz and all the committee members. I already mentioned their name in the morning twice. They are the one absolutely leading from the front, giving their 100% to make this cricket tournament a very successful one, because organizing 7 days of cricket tournament, not only the cricket tournament, along with that kabaddi, volleyball, food festival, and of course job opportunities, job fair, and even the blood donation, the blood camp and medical checkup. This is what we can see. This very rare in one shelter. That's why this is going to be one of the most historical cricket tournament.
watching only 7-day night of cricket tournament and more than 7 months of efforts which is required if you wanted to organize such a big tournament. We are thankful and grateful for all the efforts by the organizing committee. And organizing committee definitely very thankful and grateful for all the support which is given by all 10-11 teams which is participating in this cricket tournament. The owners of the team, they are the ones coming to the front and taking the teams interested with the particular tournament. Need to have a word of appreciation for all the owners of the team. They came front and of course without their support it's highly impossible to organize the big tournament. And we are thankful and grateful to all these sponsors who are really backing up this cricket tournament wholeheartedly. This is why you are seeing such a good arrangement. The more than anything else, I really love the discipline which is shown by the players so far in this 3 days of cricket tournament, respecting the decision of the umpires. This is one of the part of the success for the cricket tournament. The maintaining the discipline is very important, and the 3 days we are witness. Again played it gently and defensively down to point region. The bowler brought into attack. Mehboob with the jersey number 10. The one more very inspirational jersey number. Again played it between the mid-off and the bowler. Silly mid-off. The mid-off which is not in the sense which is mid-off is in the edge of the circle, but is a silly mid-off very close to the batter. That's one reason that team Puttur Pearls captain wanted to put some pressure on the batter to getting some closing fielders. Driven nicely. Again wide of that mid-wicket fielder. That one is also very unorthodox. Naufal picked up a single. 37 for 3. 33 needed from 27. Hedging it down and third man Vida. Chance of run out. Direct, it might be a close call for the umpires. Quickly they're going for the single. As well as single score moves on to 38 for 3. .22 needed for the victory. Mehboob. Can he do the magic here? Sings and missed. Lovely delivery. What we're talking about, the jersey number 18. Yasin. So far he's been in the middle for a long time. Once again lofted down to long on. Not more the single. Now full little correction. The batter lofted that one. One more over completed. After completion of over number 6, its total score is 39 for 3. Still 31 more runs required for the victory in 24 deliveries. Equal battle is on here, but having 7 wickets in hand for the team Manatain. Higher properties, they wait and see how well they're going to change the gear here onwards. They have to shift the gear. They got 7 wickets in hand, because once you are getting another 2 good overs here for the team Puttur Pearls, then it's going to be a situation maybe changed. And that's why these two batters need to be very careful not to play the dot balls here onwards. The gap which is going a little bit larger. 7 between run and the ball, the difference. Of course, one big shot can bring that distance to ball run, but under fed light, it's not a joke to get the distance and not joke to get the boundary. This time, he lofted. Fielder will not going to get that one. The extra cover fielder is tried his level best to take the catch, but ball just going after, almost falling after the field, away from the fielder. And they completed 3 runs. Can you believe this? Because ball is in there for a long time, and when the ball is landed, they completed 2 runs already. Then they picked up 1 extra run when the throw which is coming from the fielder. 3 valuable runs. It's 42 for 3.
The extra cover fielder has been asked to come a little bit front. 28 needed from 23 deliveries. Now difference coming a little bit less here. 5 between run and ball. Swings and missed. A very important dot ball from the bowler Rashid. The bowling is second and last over of his quota. Bowled well in the first over. Now he just wanted to continue. After 3 runs in first ball, he bowled a dot one. Yasin. This time it taken an aerial load, but I don't think he'll going to get the distance. He will going to get the fielder underneath it. Ismail bringing a smile in the dugout of the team Puttur Pearls. He takes a catch quite comfortably in the long on region. Didn't got that much of proper connection. This is what I'm talking about. Hitting the 6 in the daylight, hitting the 6 under artificial light. It's not to say easy. It's a different ball game. If it is a morning, I think it's going to be a big 6 because wind will going to take the ball out of the park. In the night, we won't get the help of a wind. It's a wind which is constant. Yesterday, we have witnessed some huge wind in the ground, but today, the different weather condition. Not at all a breeze in the ground, which is not passing in the middle as well. That's the problem for the batter to get the big shots. I request the 2 captains to go for the toss for the next match. Saskco United, Padubidri. Team Bava Suratkal captain as well as Saskco United captain, Padubidri captain. Please be reported to the main stage for the tossing ceremony. Big round of applause coming not for the cricket but for the kabaddi. That shows something is going on here. Nail biter. Celebration is on. One more big wicket is back in the pavilion. Now the Puttur Pearls are back in the game very strongly with the 2 wickets in a row. Shabir, the danger batter, is back into the hut by Golden Duck. Lovely bowling performance. Good catch taken behind the wicket. Now target is looking little bit stiffer now. 28 needed from 21 balls. This is turning out to be a great over there from the bowler Rashid. Replacing Shabir's wicket. Looks like one more. The batter with the jersey number 10 is walking towards the middle. Very interesting. Shabir replaced with the Shakir. Only one the spelling which is different. Instead of B, they put K and he become a Shakir. Now it's a bowler will go to try for the hat-trick. So far there is no hat-trick in this tournament. The golden opportunity for the bowler Rashid to get his name in a golden ink. The bowler will go first bowler to get the hat-trick of this prestigious UCL 2026. Shakir will go into face a hat-trick delivery of Rashid. Bowling! The first hat-trick of the UCL 2026. A celebration is on. Why not? He just cartwheeled the off-stump of the Shakir. Well. What an outstanding bowling performance here from Shakir. Recognition, the bowler Rashid dismissing the wicket, the stump absolutely uprooted. Well. First hat-trick of the tournament, which is came in the 3rd day of this prestigious UCL. Outstanding bowling performance. Have a look at that one. Absolutely perfect incoming delivery. Maybe he got a little bit bat into that. Cartwheeling the off stump of the batter. 3 wickets in a row. From 42 to 3. Now it's a 42 for 6. This is why we are always mentioning about don't underestimate the cricket.
don't underestimate the low target, because the small leakage can sink a big ship. And here looks like the big ship, the ship of team Manatain, slowly sinking into the deep water of the sea. Wait and see, this man will go to lift this sinking ship from the deep waters of the sea. Bilal is the batter, came into bat as the number 8 batters for the side. 1928. Oh, almost. Almost it's going to be a 4th wicket, isn't it? If we manage to get that one, it's going to be not a double hat trick. It's absolutely the 3 wickets in this over. 3 wickets in this over that takes the team Puttur Pearls right back into this game. Now last 3 overs remaining, 28 runs required for the victory in 18 balls. Now difference goes up to exactly the 10 between run and ball. The bowler will go into ball the over number 7. The team Manatain's batters really struggled with the disciplined bowling performance by the Puttur Pearls. .28 needed from 18 balls. The starts with the dot ball. I request the 2 captains, please don't waste the time. Team Bava ಹಾಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Lofted that one down to deep long on region. Will they come back for the second? No chance. They doesn't want to take a risk because they already lost 6 wickets. Now these 2 batters have to anchor the innings. Then they need to study the innings. Of course, even the target may be a little bit difficult one, but not impossible in this cricket. Shakir and Bilal, the 2 batters out there in the middle. Ah, lovely shot, played it a little bit across, but very confidently played it down to deep square like region in front of square. They were looking for the overthrow runs, but back up by the fielder from the mid-off region. With that single scoreboard is moving after a long time from 42 to 43. That means 27 needed for the victory. There are only 15 deliveries remaining. Team Bava won the toss and elected to ball first. Again looking for the expansive right. This time he got a placement right, and at least they wanted to come back for the couple, but good piece of fielding by the fielder, denying the second from the just batter. The very good piece of fielding there from the fielder, the jersey number 77, who is standing under deep square leg region, did a lovely work in the field. 25 needed for the victory in 14 balls. Lofted, and it's going to be a chance for the long on fielder, and he held it. The wicket number 7 back in the pavilion. Now Manatain, her properties are looking in more trouble. Every batter is absolutely march pasting. The wickets are tumbling like a house of cards. This is what the team Puttur Pearls wanted to do every time. I already mentioned the best way to back in the game to pick the wickets of their opposition, bring the new batsman into strike and put some pressure. Lovely piece of captaincy by the captain of Puttur Pearls, getting some closing fielders, giving some kind of pressure for the batters. Got the result for that as well, but more than anything else, wicket taken by Rashid in the previous over. 3 wickets in that over. Now the bowler picked up 1 wicket.
Mehboob bowling his last over, the 25 needed now from 13 balls. All we can see this match is once again the batting first team. Looks like almost they're in a track of defending this target of 70. Now left-hand batter came into bat with his jersey number 6-3. Mehboob, the medium faster spin bowler, did a damage in this under floodlight, exploiting the condition very well. Dries that one, but lack of placement. One more dot ball, lovely over which is comes in and here for Mehboob. Economical come wicket taking delivery, wicket taking overs which is comes in. And now 2 overs remaining, 25 runs required for the victory. 12.5 runs per over the required run rate. You are watching Whitestone United Cricket League 2026. Now do or die situation here for the team. Atelier Manatain Hair Properties. They have to look for some big shots here, and no other alternative way for the batters to get into the target. Have to talk with the bat, but here the bowler is brought in to attack the ball. This is a very important over with the jersey number 87. Sinan may be a little bit expensive in the first over, but he is a very good bowler, and wait and see how well you're going to bowl this his second and last over of his quota. Oh, what a delivery. Penultimate over which is started, and Sinan starts with a quicker one, the faster one. Even the batter is thought that it might, the ball is in the slot to hit the ball towards the mid wicket, but beaten by the pace which is generated by Sinan. Excellent fast bowler with the very good bowling rhythm and action. This time catch it is a call, and long off fielder is underneath it, and it taken that one comfortably. One more wicket back in the pavilion. It's 45 for 8. Atelier Manatain are looking in more trouble now. Looking for the long distance. It taken an aerial route, but fails to get the distance, and long off fielder comfortably held. Now the Farvez, the new batter, walks towards the middle. Sinan is really rewarded with its fast bowling, and picked up a very important wicket for his team. Now Puttur Pearls are in a driving seat, because we are now with the help of tail-enders. Us getting 25 in 10 balls is not a joke, but not impossible as well. The believeness is very important. Trying is very important. Wait and see. Sinan, third time in this over, is absolutely firing from the commentary box end. This time he is firing, and batsman is also firing, and he got the distance. This is what I am always talking about. This is what the present cricket is all about. You cannot underestimate any batter. If you are a tailor, if you think that the tailender is in front of you, but sorry man, it's your absolutely, your thought is wrong. And the batter absolutely nailed that one. Farvez, the batter, is not really given up. The 10, of course, 51, which is the total score. 19 needed for the victory from 9 balls. One more 6 will going to make a little bit easier. This Apish
Wicket keeper or the bowler. The bowler himself takes the catch. Cotton ball. He says, the bowler celebrated in a unique way, kicking the ball from his boot, showing his frustration because you know exactly the Parvez hit him badly into the mid wicket and he need to come back very strongly in the next ball. The 9th wicket is back in the pavilion now. Last pair in the middle for the team. Mannate. The Shafiq is the number 11 batter. He walks towards the middle. And his team is needed 19 from 8 balls. We are witnessing some 3 matches today, which is a low scoring encounter. Where morning starts with some blistering knock from Usman Patel. Scored the first highest runs of this tournament. Scored half centuries for half century. And we witnessed some good innings from Salim Mighty. He scored one more big knock for his team after that 50 in the previous day. And then good innings from Hamdan for the team of Puttur Kings. Always seen some great knocks in the day number 3. They wanted to go for the expansive. Chance of run out. It's going to be easily done. Oh, I miss it. My goodness. This is all about, we are seeing is absolutely drama in the middle. And the non-striker is already given up. He thought it's all over. But he can't believe his luck that the throw which is missed by the bowler. 7 ball, 19 needed for the victory. Batter definitely going to try for the big shot to the number 11 batter. Shafiq will go into face Sinan. Oh, lovely Yorker led delivery. Well fielded on his follow through, using his feet. Lovely over, great over from the point of view of a team Puttur Pearls, which comes to an end here from Sinan. Now last over remaining and 19 runs required for the victory. So 19 runs required for the victory. Needed from last over. Some excitement is going in that Kabaddi court. Big noises. Looks like the big match is going on here. The supporter of the team, respective teams are really encouraging their the players. But here is, I think, do or die situation here for Mannate. 1 wicket remaining and 19 runs required for the victory. The bowler will go into start the last over. Here comes Naheem, bowling last over to the left-hand batter. Starts with a wide, 18 needed. 18 needed from 6. Now they're taking the review, the fielding team taking the review for the decision of the umpire, whether it's going to be a wide or not. The third umpire will go into watch here, the umpire Muzamil here in the commentary box. The wide which is confirmed by the third umpire as well, so that 1 more run added to total. I requested the fielding team, kindly request to make it past. 1 more match is remaining here. Last 6 balls remaining and 18 runs required for the victory. 3 sixes will going to do the match. The more than the 6, even the boundary can do the job. Three boundary and 1 6 can do the job as well. Here comes Naeem. Ball him, that's it.
The bundle out. Naeem celebrates. And his teammates also celebrates here. The victory for the team. Puttur Pearls defeated Manatain Air Properties by 17 runs. I request please all the players, please vacate the ground. We are having one more match. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಪೈರ್ಸ್ನವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. So man of the match which is goes to, of course, when it is going to be a low scoring encounter, I think is always going to be a contribution from the bowler. And bowler one picked up a first hat-trick of the tournament, will be the man of the match. Rashid is doing the job here for his team with the bowling. Hat-trick wicket, 2 overs, no maiden, 8 runs and picked up a 3 wickets. And he will be the man of the match. Thank you. Rashid has been awarded by 3,000 rupees by owner of team Puttur Pearl. Rashid has been received with the man of the match as well as rupees 3,000, as well as a trophy and gift vouchers. Everything has been presented in the main stage. It's a time for me to leave and it's a time for Rashid to take. And one more wonderful international language commentator Rashid to please come forward, and I request Nawaz please come to the dais to present the man of the match award. One more wonderful cricket commentator, the very experienced and with the golden voice, is entertained in the 3 days. Now we will going to be the chief guest to present the man of the match award to Rashid for his match winning performance from the ball. 2 overs, no maiden, 8 runs, picked up 3 valuable wickets. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಮನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯಾರಾದರೂ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ಡಿನ್ನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು.
The 12th man of both team, please report to the mic stand, commentary box as soon as possible. Team Bava ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಸ್ಕೋ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು. ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಸರನ್ನ ಬಲ್ಲವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೋರರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. तो यूसीएल कम्युनिटी फेस्ट 2026 के तीसरे दिन के आखिरी मैच टीम बाबा के खिलाफ सैस्को यूनाइटेड पड़बिद्री। टॉस जीतने के पश्चात टीम बाबा के कप्तान ने गेंदबाजी चुने हैं। पहली गेंद वाइटम ओवर द विकेट से और इस बार ये रिस्की सिंगल, फील्डर के सामने गेंद को रोककर सवाल करते हुए ये रिस्की रन। 10 ओवर के मैच शुरुआत के 3 ओवर पावर प्ले के रूप पर मिलेंगे। बल्लेबाजों के लिए मौका है कि वो थोड़ी सी रफ्तार दिखाकर सर्कल के अंदर खड़े रुके फील्डरों को हराकर अगर बल्लेबाजी करते हैं तो बड़ी नतीजा मिलेंगे, अच्छे रन मिलेंगे। अब देखना है कि शुरुआत के 3 ओवर पावर प्ले के किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। पिछले मैच के हार के बाद टीम बावा किस तरह से सुधारण लाए हैं, पिछले हार की वजह को किस तरह से जांचे हैं और ये रहा सुधारण। पिछले मैच पर जिस तरह से परिणाम सुने नकारात्मक मिले तो शायद टीम बावा के मालिक मोहिद्दीन बावा सर से कुछ सलाह अवश्य मिले होंगे, मार्गदर्शन मिले होंगे कि जीतना कितनी जरूरी है उनके लिए। अपने विभाग पर अंक पट्टी पर अच्छे जगह पाने के लिए कम से कम दूसरी मैच को जीतना ये एक प्रतिष्ठा भी है। और हालांकि मैं तारीफ करूंगा मोहिद्दीन बावा सर को, दक्षिण कन्नड़ जिला के किसी भी कोने में क्रिकेट हो या क्रिकेटेतर बात अपने ही फौज लेकर खड़े हो जाते हैं। माजी शासक भी हैं मैंगलोर नॉर्थ के, क्रिकेट के साथ पहचान बनाकर क्रिकेट के साथ ही लोगों के दिल जीतकर और उसके जरिए राजनीति पर इस तरह से प्रवेश किए जिस तरह से सिंघम देखे होंगे आप। किसी भी रुकावट बिल्कुल उन्हें रोकने पर कामयाब नहीं हुए थे जब उनके राज चल रहे थे। आज अधिकार हो या ना हो लेकिन आज भी लोगों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं मोहिद्दीन बाबा जी। गेंदबाज के नाम यहां तक पहुंचाइएगा, टीम बाबा के कोई 12वां खिलाड़ी प्लीज स्कोरर को साथ दीजिएगा। अरशाद और विकेट के पीछे गेंद दौड़ने लगे, नकाश मुन्ना तेजी के साथ गेंद तक पहुंचने के प्रयास, लेकिन मुन्ना के पैर अपनी दौड़ेपन शुरुआत करने से पहले ही गेंद की रफ्तार बढ़ चुके थे। लेकिन फिर भी मुन्ना काफी कोशिश किए लेकिन गेंद को रोकना मुमकिन नहीं हो पाया और ये 4 रन। हर्षद वाइड +4 बिना गेंद दाखिल हुए ये सिक्सर से भी बढ़कर मुनाफा है। अगर 6 रन सिक्सर के रूप पर भी मिल जाती तो एक गेंद वहां पर दाखिल हो जाती। यहां पर बिना कोई गेंद दाखिल हुए 5 रन मिले बोनस पर। इस बार छेड़ने की कोशिश किए, अगर छेड़ने के समय पर थोड़ी सी भी
विग्राहन वहां पर दिखाई दिया होता। बल्ले और गेंद के बीच छोटी सी संपर्क काफी थे। चिल्लाकर अपील अवश्य आपके कानों तक पहुंच जाते थे, क्योंकि टीम बावा अब पिछले हार के बाद इस जीत को काफी प्रामुख्यता दिए हैं। पैरों पर टकराए, बड़ी आवाज। सभी खिलाड़ियां आगे बढ़ते हुए अंपायर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हर विकेट के ऊपर वो इतनी गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। वो जानते हैं पिछले मैच जिस तरह से उनके हाथ से फिसल कर निकल पड़े। और आज टीम बावा के साथ पैराडाइज कृष्णापुरा के महारथियां, जो हमेशा मोहिदीन बावा के साथ दिए हैं, उनके हर योजना में कंधे से कंधे मिलाकर उनकी योजनाओं को सफल बनाए हैं पैराडाइज कृष्णापुरा के हर एक वो महारथियां। और आज मस्बा पैराडाइज, रहीम मार्क, अबू बकर, हमीद, कुछ चेहरे हमारी नजर में आए हैं जो आज टीम बावा के साथ जुड़कर उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और ये होना भी चाहिए, जब इस समुदाय के साथ और क्रिकेट के साथ जब मोहिदीन बावा इतने बड़े उत्साह दिखा रहे हों, तो ऐसे में उनके पीछे हौसला बनाने के लिए, उनके हिम्मत बनाने के लिए अवश्य आपको रुकना ही होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मोहिदीन बावा ऐसे टीम खरीदते हैं। इस तरह की प्रतियोगिता में अपनी टीम को लेकर प्रोत्साह करते हैं ऐसे कार्यक्रम को। पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धनसील भटकल के विकेट गिरने के बाद जुड़े ये जोड़ी समीर और इरफान, समीर और इरफान की जोड़ी, सैस्को यूनाइटेड पड़ुबिद्री। आज के ये आखिरी मैच है और इस आखिरी मैच पर दोनों टीमों को एक विचार तो उनके दिमाग पर खड़क रूप से चिपक चुके हैं कि पहले बल्लेबाजी में रनों की संख्या कितने दिखाना है। शुरुआत में अगर गेंदबाजी की मौका आप चुनते हैं तो ऐसे में आपकी योजना क्या होना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 दिनों से अलग अलग नमूने के मैच देखे हैं, छोटे रन के साथ बड़े बड़े रनों को बरसात के रूप पर फैलाते हुए 147 146 बनाए थे यूटी फरीद वॉरियर्स ने, और व्हाइट स्टोन वॉरियर्स ने बनाए थे 122 रन। इरफान और समीर की जोड़ी हर दिन आप जिस तरह से देख रहे हैं, मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों के उत्साह बनाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके हौसला बनाने के लिए, उनको चाहने वाले जितने भी हैं, उनको प्रोत्साहन करने वाले, उन महारथियों के हाथों से ऐसे सम्मान मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं, अगर वो अच्छे प्रदर्शन दिखाकर अपनी टीम को जिताने के काबिल दिखाए। तो अब इरफान के लिए स्टार कोडी के महारथियां हर सिक्सर को मिलेंगे 1000 और हैट्रिक लगाए तो यूं ही 3000 बन जाएंगे। तो इरफान जी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और बिछा दिए विकेट। इरफान के लिए सिक्सरों के उस बेहतरीन पन के लिए धनराशि ऐलान होते ही विकेट ऐसे बिछ गए जिस तरह से कमल बिछ जाते हैं। तालाब पर कमल जिस तरह से अपने पंखे बिछाकर अपनी खूबियां दिखाते हैं, उसी तरह से गेंदबाज ने अपनी खूबियां दिखाए विकेट को बिछाकर। तो टीम बावा ऐसे लग रहा है कि पिछले हार कड़क से मिर्ची लगे हैं, शरीर के घाव के ऊपर नमक छेड़े बराबर पिछले हार।
और अब देखना होगा कि दूसरी मैच पर क्या वापसा दिलाकर अपनी टीम के मालक को यह विश्वास दिलाएंगे कि पिछले हार वो हमारी कमजोरी नहीं थे, बस हम समझने में देरी कर दिए, इस मैदान की क्वालिटी को हम समझने में थोड़ी सी देरी कर दिए, खिलाड़ियों को समझने में हम थोड़ी से समय बिताए, इस वजह से शायद पिछले मैच पर हमें जीत नहीं प्राप्त हुए हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, विश्वास रखिएगा, यह संदेश होगा जिस तरह से ये गेंदबाजी कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता के तीनों विभाग जो हैं, वॉलीबॉल, कबड्डी और क्रिकेट, टीम बावा ने तीनों विभाग पर टीम खरीदे हैं और इससे बड़े प्रोत्साहन क्या हो सकते हैं। जहां भी अंडरआर्म क्रिकेट हो या ओवरआर्म क्रिकेट, एमपीएल पर भी आप टीम बावा को देखे हैं, केएसपीएल पर आप टीम बावा को देखे हैं। मैंगलोर पैंथर्स के मालक थे टीम बावा, मोहिदीन बावा। क्रिकेट को बिल्कुल अपने दिमाग से हटने नहीं दे रहे हैं मोहिदीन बावा। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, खतराई जरूर थे लेकिन फिर भी सवाल कर दिए। गेंदबाज के पीछे खड़े रुके फील्डर के सामने गेंद को रोकते हुए रन के लिए मन लड़ाना, यह रिस्क नहीं तो और क्या है, क्योंकि यह 10 ओवर की मैच है। यहां पर जल्दबाजी करते हुए अपनी विकेट को गिराना यह निश्चित रूप से मूर्ख वाली बात है, क्योंकि एक दो गेंद बर्बाद अगर हो जाते हैं, डॉट बनाते हैं आप, तो ज्यादातर एक्साइट होने की जरूरत नहीं होती है 10 ओवर की मैच में। अपने आप को कमजोर मानने की जरूरत नहीं पड़ती है 10 ओवर जैसे मैच में। अगर एक ओवर पर छोटे रन बन गए, आप नहीं सामना कर पाए, तो इंतजार कीजिएगा अगले ओवर के। इस बार भी अच्छी गेंद ब्लॉक कॉल पर, बल्ले के नीचे वाले हिस्सा के अंदर नीचे ही दब चुके थे गेंद। ये गेंदबाजों की क्वालिटी, बल्लेबाजों को मौका ना देना, गेंद की टिप्पे की जड़ को समझने की मौका ना देना, क्वालिटी है ये। रमेश टीम बावा के भरोसेमंद खिलाड़ी, दाहिने हाथ राउंड द विकेट से, और इस बीच गेंद को घसीटते हुए जिस तरह से कोने में रुके हुए या किसी सोफा के अंदर छुपे हुए सफाई वाली चीजों को जिस तरह से झाड़ू उसके अंदर से घसीट कर लेते हैं, उसी हिसाब से यहां पर अपने बल्ला घुमाए, पैर की जड़ से ही गेंद को घसीट कर निकाले। ओवर की समाप्ति, दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 11। अब तो संदेश काफी अच्छे मिले हैं टीम बावा के लिए। अनीस पटवित्री, अराफत, सैफुल्ला, नकाश मुन्ना, अजहरुद्दीन, मुस्तफा, अरशद, रमीज, साकिब, बासिम, मुजाहिर, सफवान, इंपैक्ट प्लेयर, ये स्क्वाड है टीम बाबा के। कुछ अंडरआर्म खिलाड़ियां और कुछ अनुभवी ओवरआर्म खिलाड़ियां, और ये चालाकी और इसमें समझ सकते हैं आप बल्लेबाज के संयमता को, सब्र को, क्योंकि गेंद जिस तरह से निकल आए गेंदबाज के हाथ से, अगर कोई दूजा होता तो गेंद की जो पोजीशन थी, रिलीजिंग पोजीशन, हाथों को जितने तेजी के साथ घुमाकर अपने एक्शन दिखाए थे गेंदबाज ने, अरशद, कोई भी समझेगा कि गेंद तेजी से निकल आने वाले हैं, लेकिन उनके हाथों से गेंद छूटने के बाद इतनी धीमी गति से आए और बल्लेबाज भी इंतजार करते हुए देखने लगे। वन बाउंस सीधे फील्डर के हाथ पर, मिड विकेट पर गेंद को पुश करने के बाद धीरे धीरे से रनों की संख्या आगे बढ़ रहे हैं। अब 13 रन पर समाप्त हुए, 14 गेंदों पर 13 रन। दूसरे विकेट, 2 विकेट खोने के बाद अब तमसीर और समीर की जोड़ी, बाएं हाथ के खिलाड़ी समीर स्ट्राइक पर कदमों की इस्तेमाल करना चाहते थे, आगे निकलते हुए फुटवर्क के इस्तेमाल, लेकिन जिस इरादे के साथ वो कदम बढ़ाए, आगे बढ़े, बिल्कुल वो साकार नहीं हो पाए। बल्लेबाज तब आगे जाते हैं
जब उन्हें गेंद पिच होने के बाद उनके मनपसंद ऊंचाई पर उन्हें जब हिट करने को मिले, गेंद को उछालने की मौका मिले, तब उन्हें वो लोग सोचते हैं कि बल्लेबाज सोचते हैं कि मैं थोड़ी सी आगे बढ़ूं, वरना गेंद की ऊंचाई मेरे बल्ले से सही मात्रा पर नहीं टिक पाएंगे। लेकिन इस बार गेंदबाजी की अच्छेपन निर्धार बदल लिए और ये ऊंचाई पर शानदार तरीके से निभाए। लेकिन एक जिम्मेदारियां जिस तरह से हमने देखे हैं, दिए हुए जिम्मेदारी को निभाने की तरीका, बात करने की तरीका, अल्फाज जिस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं, रेस्पेक्ट जिस तरह से वो अपने एक्सप्रेशन और जबान से निकलने वाले शब्दों से देते हैं, इस वजह से ही कामयाबी के रास्ता खुलकर बिना कोई झिझक के साथ खुल जाते हैं ऐसे संस्थाओं के लिए, कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए। कई मौके से छूट ना जाए, ग्रामीण विभाग के प्रतिभाओं को मौका देने की एक ऐसी योजना, क्योंकि आप जानते हैं आजकल अच्छे अच्छे प्रतिभाएं पर्दे के पीछे छुप जाते हैं मौका ना मिलने की वजह से, इस समाज के सामने आने की मौका नहीं प्राप्त होते हैं। और इस बात को ठीक तरीके से समझने के बाद, इस बात के ऊपर अध्ययन करते हुए यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन ने निर्धार किया कि हम कम्युनिटी के उन प्रतिभाओं को निराशा नहीं करेंगे, उन्हें इतनी ऊंचाई तक लेके जाएंगे कि देखने वाले दंग रह जाए। अगर किसी को तालीम की जरूरत है तो वो भी तैयार है। छोटे छोटे बच्चों को प्रोफेशनल क्रिकेट की तालीम हो, जो भी जिम्मेदारी सिराज अरमाल और इम्तियाज हज्जाज के हाथ पर सौंप दिए तो बस समझ लीजिएगा कि काम बन गए। वाइड बॉल, टीम बावा के खिलाड़ियां तो अपील कर रहे थे, ये अंपायर को उनके दिमाग को फिराने की ये कोशिश है। अक्सर ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर भी आप देखते हैं, जब गेंद लेग स्टंप पर स्टंप्स के करीब निकलते हुए निकल पड़ते हैं, तो ऐसे में वाइड की सजा से बचने के लिए अंपायर के ध्यान को कहीं और लेके जाते हैं। अपील करने के साथों साथ कभी कभी अंपायरों के दिमाग से वो वाइड वाली बात हट जाते हैं। तो ये कोशिश अब कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ये रेफरियां अनुभवियां हैं, काफी तजुर्बा है। तमीम, मरजूक, कबीर, दिनेश आचार्य, इब्राहिम मात्राड़ी, कितने बड़े बड़े महारथियों को, साधकों को जो रेफरी की जिम्मेदारी में साधना इस तरह से बनाए हैं कि पुरस्कार भी इनके सामने झुक जाए। व्यवस्थाओं में कोई कमजोरी नहीं, आप जितने भी ढूंढ लो, किसी भी कोने से आप जांच कर देख लो, बस आपके मुंह से शाबाशी निकल आएंगे, क्योंकि ऐसे सुविधाएं कहीं और देखना मिले हैं आपको। तीन ओवर की समाप्ति के बाद अब मुस्तफा तैयार है चौथे ओवर की शुरुआत के लिए। 15 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अच्छी लाइन, अच्छी शुरुआत। मुस्तफा एक अच्छे केश विन्यास है और उनके शारीरिक भाषा भी क्रिकेट के लिए बनाए हुए स्ट्रक्चर लग रहे हैं मुस्तफा की बॉडी लैंग्वेज। और इस बार खतरे के चेतावनी, लेकिन फील्डरों के बीचों बीच गेंद टिप्पा का है, बिल्कुल कोई खतरा नहीं। और गेंदबाजी की शैली आप गौर से देख लीजिएगा, मलिंगा की शैली आप देखे होंगे, आखिरी मौके पर अपने हाथों से एक अनोखी शैली के साथ एक विभिन्न रूप पर गेंद को छोड़ते हैं हाथ से। तो मुस्तफा भी अपनी गेंदबाजी के लिए एक अलग पहचान बनाए हैं। इस बार थोड़ी सी धीमी गति के साथ, गति में थोड़ी सी हलचल दिखाते हुए, बल्लेबाजों के एक्सप्रेशन अगर थोड़ी सी विस्फोटक है तो ऐसे में इस तरह की गेंद काम आते हैं। मुस्तफा लगभग 5-6 कदमों के इस्तेमाल करते हुए, और इस बार आगे बढ़े, आगे बढ़े।
कवर्स की एरिया पर गेंद को खेलने के बाद, लेकिन 2 रन तो निश्चित रूप से मिलेंगे यहां पे। जिस तरह से हमने पिछले ओवर में भी कहा कि बल्लेबाज तब आगे निकलते हैं जब गेंद के टिप्पे को वो ठीक तरीके से नहीं अंदाज कर पाते हैं, और टिप्पे के बाद गेंद की ऊंचाई जब उन्हें परेशान करने लगते हैं, तो ऐसे में कदम बढ़ाकर छोटी हाइट के साथ गेंद को उछालना, ये इरादा है, ये योजना है बल्लेबाजों के। इस बार अपील जोरदार से, लेकिन अंपायर को विश्वास नहीं नजर आए। विकेट कीपर और गेंदबाज मिलते हुए बड़ी आवाज के साथ अपील कर दिए, लेकिन अंपायर से तिरस्कार। और अब देखना है कि जी हां, रिव्यू मांग रहे हैं कि मुस्तफा और विकेट कीपर के बीच बातचीत के बाद अक्सर जब रिव्यू मांगे जाते हैं तो कप्तान भी दौड़कर विकेट कीपर के पास आकर पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, गेंद जब उनके पैरों पर टकराए उस वक्त क्या विकेट के सामने थे? रिव्यू मांग सकते हैं आप श्योर हैं? उसके बाद में रिव्यू के मांग रखते हैं अंपायरों से। और यहां पर भी टीम बावा के कप्तान विकेट कीपर और गेंदबाज के साथ विचार विनिमय करने के बाद उन्होंने भी कहा कि विश्वास के साथ रिव्यू ले लेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि फलितांश अच्छे मिलने वाले हैं। अगर मिले तो टीम बावा के लिए यह बड़ी सी कामयाबी है। चौथे ओवर के 2 गेंद अभी भी बाकी। रन संख्या में कोई भी बढ़ोतरी नहीं, रफ्तार नहीं, क्योंकि आखिरी मैच है ये। लगभग 75-80 जैसे रन इस आधी रात को ठंडी मौसम पर सर पर गिरने वाले इस शबनम के साथ 75-80 जैसे रन अच्छे रन कहलाते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि रन कितने बनेंगे। अब तक तो रनों की संख्या, जैसे कि आप जानते हैं, बड़े रन संख्या नहीं बन पाए हैं। 19 रन, चौथे ओवर के 2 गेंद बाकी, यानी कि 22 गेंदों पर 19 रन बने हैं। इंतजार अब तीसरी अंपायर के निर्धार के लिए। ऑन फील्ड अंपायर के पास किए गए विनती पर पुरस्कार नहीं मिले थे टीम बाबा के खिलाड़ियों को, मुस्तफा को। तो ऐसे में अब देखना है कि तीसरी अंपायर बेद्रा मीडिया की कैमरा पर कैद हुए उस दृश्य को देखकर क्या कहेंगे। जी हां, अंपायर अपने निर्धार बदलते हुए तीसरी अंपायर ने जो निर्धार यहां पर प्रकट किए हैं उस पर सहमत दिखाकर आउट के करार, और क्या जबरदस्त रिव्यू मांगे हैं। हमेशा अच्छे खिलाड़ियों के क्वालिटी, इस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इतने श्योर होने की जरूरत है जब आप रिव्यू मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं। वरना कभी कभी अहम मौके पर आपके जो काम आ सकते हैं ये रिव्यू, उसे बेवजह पर बात करना यह समझदारी नहीं। उन्नीस रन 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद। इस बार भी मुस्तफा श्रीलंका के लसित मलिंगा के हाथों से निकलने की तरफ, यहां पर लगातार विकेट गिरने के बावजूद भी रिस्की से रन लेना काफी पसंद कर रहे हैं यहां पे। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद सैस्को यूनाइटेड पड़विद्रे 21 रन, अब 36 गेंदें बाकी। और आप देख रहे हैं यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन के सहयोग के साथ एक बेहतरीन निरीक्षा के साथ ज्यादातर अच्छे खासे खिलाड़ियों को इस समाज के सामने, क्रीड़ा क्षेत्र के सामने लाकर उन्हें अच्छे मौका देने की ये योजना। और दूसरी तरफ मिले खबर के अनुसार
कबड्डी के आंगन में पड़ुबिद्री टीम फाइनल पर विराजमान हुए हैं। बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन पड़ुबिद्री टीम के लिए। एक तरफ क्रिकेट की जश्न है और दूसरी तरफ कबड्डी के वो शानदार संघर्ष वाली एक एक क्षण को किस तरह से आस्वाद ले रहे हैं दर्शक, वाकई जितने देखे और भी देखने के मन करते हैं, क्योंकि उस कबड्डी के आंगन को एक अंतर्राष्ट्रीय मैदान से भी बढ़कर सजाए हैं यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन ने। और 31 तारीख को होगा वॉलीबॉल की झलक भी। साकिब 5वीं ओवर की जिम्मेदारी टीम के कप्तान साकिब के ऊपर छोड़े। इस बार हल्के से छेड़ते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की एरिया से गेंद को पिक कर दिए फील्डर। एकमात्र रन। शॉट एक्स्ट्रा कवर पर अजहरुद्दीन, शॉट कवर पॉइंट पर मुजाहिर। विकेट कीपर के पीछे फर्स्ट स्लिप की जिम्मेदारी नकाश मुन्ना। इस बार गेंद पर कोई खराबी नहीं। बल्लेबाज आसानी से गेंद को फ्लिक करना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन पैरों पर टकराए और अंपायर अपने इशारे से कहा कि ये बल्ले से नहीं बल्कि लेग बाय है। बड़ी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं सैस्को पड़ुबिद्री के अभिमानियों के कान। और दूसरी तरफ क्रीज पर खड़े रुके और ये ओवरथ्रो टीम बावा सूरतकल। अब तक खर्च हुए रनों की संख्या को देखकर यह मत समझ लीजिएगा कि अब कुछ भी रन निकल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। रन संख्या छोटे बने हैं, ऐसे विचार दिमाग से हटा लीजिए, क्योंकि यह क्रिकेट है। यहां पर एक एक रन आपके कीमती रन बनते हैं। अगर आपकी टीम 1-2 रन से हारने पर मजबूर हो गए तो याद करेंगे आप ऐसे गलतियों से बने रन। और नकाश मुन्ना डायरेक्ट हिट टू द विकेट। यह है मुन्ना, छोटे उम्र में ही प्रोफेशनल क्रिकेट पर बड़ी साधना किए हुए खिलाड़ी। अपनी उम्र 17 होते ही स्कूल विभाग के मैचों पर शतक बनाने के श्रेय अपने शैक्षणिक समय पर बड़े बड़े दिग्गजों के खिलाफ अच्छे खासे रन बनाने की साधनाएं, जितने भी पुरस्कार हैं तो काफी संख्या के पड़े होंगे मुन्ना के घर में। और मैं आपको याद दिला दूं कि 2016 के मैंगलोर प्रीमियर लीग पर रेड ऑक्स टीम के मालिक थे नकाश मुन्ना और अपनी टीम को फाइनल पर दिखाए थे। तो यह काबिलियत नहीं तो और क्या है। रेड ऑक्स कुडला के नाम सुने होंगे आप, और उस मैच को भी संगठित किए थे सिराज, इरमाल और इम्तियाज। तो इम्तियाज और सिराज भी जानते हैं कि नकाश मुन्ना की सक्षमता क्या है, काबिलियत क्या है, क्रिकेट पर उनकी जानकारी क्या है, तजुर्बा क्या है। अगली गेंद, इस बार गेंद को काफी सुंदरता के साथ गेंद को छेड़ दिए। मुसाहिर दौड़ते हुए गेंद के पीछे आए, लेकिन 2 नहीं 3 समाप्त हुए। अब लग रहे हैं कि शरीर पर थोड़ी सी गर्माहट फैलने लगे हैं सैस्को पड़ुबिद्री के। हाथ पैर के आलस्य को मिटाकर अब दौड़ना होगा। इस बार भी अच्छी थी लाइन, पिछली गेंद की तरह इस बार भी गेंद को हल्के से स्पर्श देना चाहते थे, लेकिन बिना संपर्क के साथ गेंद विकेट कीपर के हाथ पर मिले। और ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर 28 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। अब देखना है कि बचे हुए 5 ओवर, अब तक तो गेंद के हिसाब में भी रन खर्च नहीं किए हैं, और पहली ओवर पर वाइड +4 जब मिले तो ऐसे लगा कि
ऐसे गलतियों से टीम बावा दोबारा हार की तरफ मुंह मोड़ेंगे, क्योंकि वाइड +4 जैसे गलतियां बिल्कुल माफी के लायक नहीं, लेकिन फिर भी अपनी गेंदबाजों के ऊपर रखे हुए विश्वास बिल्कुल गलत साबित नहीं हुए। टीम बाबा के शानदार गेंदबाजी के साथ केवल 28 रन के अंदर आरंभिक 5 ओवर के बल्लेबाजी को रोक दिए हैं सैस्को पड़बिद्रे के। तो अब ड्रिंक्स ब्रेक, थोड़ी सी पानी पीने के बाद अपने शरीर को राहत दिलाकर फिर वापस आएंगे छठे ओवर को लेकर। और इससे पहले कि छठे ओवर शुरुआत हो, रशीद संकुलिकी की आवाज सुनेंगे हम, आंग्ल भाषा के वीक्षक विवरणकार। तो आइए रशीद जी, अब आपकी बारी। सैस्को पड़बिद्री की बल्लेबाजी के आखिरी हर एक क्षण को आप अपने शब्दों में बयान करेंगे। So thank you, Star Nawaz sir. This is very interesting game. The last match of day number 3, which is in progress. Oh, there's a big appeal and finger raising. This is going to be one more good breakthrough for team Bava. They are striking right in time, breaking the partnerships. And it's going to be very, very interesting now, because already I think team Saskco United Padubidri, they have already lost. And the third umpire's help has been taken. The review has been taken from the batting team. Saskco United Padubidri have taken a review for the third umpire. And the third umpire is going to check the decision here in the com box. And the Bedra Media doing a great job of live telecasting this wonderful United Cricket League, proudly sponsored by Whitestone, the title sponsor for this prestigious cricket league. And the United Empowerment putting a great, wonderful plan. 1 week of community fest in this historical sea ground, which is already witnessing cricket and kabaddi going on at a simultaneous time. And already a lot of national stars are representing in the kabaddi as well today. And out is a signal from the third umpire. So the decision of the on-field umpire stays, and Saskco United Padubidri, they are losing one more man. So Fauzan Bhatkal. So Fauzan Bhatkal is into the middle as a new batsman. He is walking in at number 8 position after the wicket of Hanif departed. So Shoaib is a man still in the middle. Shoaib and
Fauzan. They're going to require to put a good partnership because their team is in a difficult situation, already losing 6 wickets. Oh, that's a good delivery coming in for the right-handed batsman. A little bit outswinger and a slower one as well. And especially testing the patience of the incoming batsman Fauzan, because bowling the slower one and also a loose line and length from the bowler is testing the bowler, because under the floodlights, if they are impatient, or just chipped it off the toes. Nicely driven that one into the mid-wicket region, and some confusion. Is it going to be referred? Yes, I think that's a close call, and a soft signal has been given from the square leg umpire Muzammil Alakote, one of the finest umpires, not just in overarm format, even in the underarm format. Along with him, the main umpire Tamim Ullal, multi-sportsman, not just the cricket, is also in football, one of the best coaches as well, one of the best referees as well in and out is a signal from the third umpire. So Fauzan departed for team United Padubidri. They are losing Fauzan, one more wicket, which is back in the pavilion. And I think they're playing their first game. And the team Bava, they're playing their second game today. And that just shows the inexperience in reading the conditions team United Padubidri are facing. Especially playing your first game under the lights, definitely going to be a lot more challenging than playing your first game in the morning or maybe the daytime, because there's wind which is blowing from one direction, and you're going to have a lot more opportunities. You can make strategical plays as well, but under the lights you need to play a long innings, especially the top order batting. They need to stick to the crease and play some brilliant innings, and it's very interesting. The wicket keeper is going towards the main umpire. There's a brief chat going on between the wicket keeper and the main umpire, Tamim Ullal. So yes, I think the opposition team just asking for the change of the bat there. That's just the confusion thing. So 30 on the board.
So the ball which is going into the hands of the long on fielder who is coming in towards that mid-on position and collecting the ball finally. So the scoreboard is being added with the single. So the total moves on to 31. Still they got, excluding this over, 4 more overs. Still they're remaining in their first innings. And United Padubidri, they need to play a standing innings. This is the same situation Puttur Pearls faced yesterday against, in the afternoon time, against the team Whitestone Warriors. They were down 5 wickets for just 25 runs in 5 overs. Oh, swings and misses completely. This is what I'm talking about. Just going for the big one is totally a wrong call there from the batters of United Padubidri. So the icon player still in the middle for United Padubidri, Shoaib Qureshi. And now the new bowler is being introduced. The bowling is starting from the far end. Oh, when to play the reverse. Couldn't manage to get proper timing. Bowler bowled a slower one. And batsman totally missed timing that delivery. Trying to go for the shot very quickly without watching the delivery. Ball which is coming very, very late. Excellent usage of the slower one. Oh, struck that one in the air, in the air. Yes, bowler takes it. Cotton ball. Cotton ball taken there for the bowler. So Arfat gets a breakthrough and the icon of United Padubidri is walking back. Saskco United Padubidri, they're losing one more wicket, which is a big wicket. Shoaib Qureshi walking back to pavilion. Scoreboard which is having 32 runs. So bowler continues. Swings and couldn't manage to get bat onto it. So dotted delivery. Ball which is going, I think, over the wicket because he's exposing that leg stump. Trying to cover the wicket. Just pushes the ball. In fact, it comes back right in time because the ball which is going into the hands of that short point fielder. This is a very good field setup from the Bava, team Bava. Oh, again, he just wanted to play it into the mid-wicket region but couldn't manage to get any connection at all. It's going to be one more dot delivery.
3 consecutive dot balls in this over. Arafat. Oh, that delivery almost coming close to the wicket. There's an exciting appeal going on, but the main umpire, Muzambil Alekote, very much unmoved, very experienced umpire. Even the fielding team, they did not go for the review. Bowling which is starting from the commentary box, and bowler bowls right into that legs of the batter. A perfect Yorker length delivery, and leg by has been rightly signaled there from the most experienced umpire, Tamim Ullal. Ball which was way quicker. Even the scorer is very much shocked that the ball, even after getting the leg by, has gone towards that outfield. Once again swings, and this time given comfortably, no hesitation for the main umpire. Straight away Tamim Ullal, as soon as he heard the appeal, he just raising his finger, and batters, the batting side has already lost their review, so they cannot go for the review as well. So one successful review, one unsuccessful review is only allowed for one innings. If you're batting and take a review and you get it wrong, it's gone. For the entire innings, you cannot take a review again. So that's why you need to use the reviews very carefully. This 10 over format, each and every single decision which you are going to make is going to be very, very, very important. So the new batsman Tamsil into the middle. Oh, just driven that one nicely into the deep extra cover region. Ball which is coming as a low full toss, and the batsman just opening the face of the bat and rotates the strike. That's a good batting coming in from the batsman. Oh, superbly played there from the batsman. Just exquisitely taking his foot away and opening the face of the bat to block the delivery which is coming out the leg stump. Very well negotiated there from the batsman. Bowler Ramesh so far has completed 4 deliveries. Oh, just into the full length area, rightly bowled that one. The current run rate which is going on at 4.7. Oh, directed required, and he takes the opportunity
But that's not going to cause any extra damage because straight away the backup fielder came in right time. Good fielding so far from team Bava. So one more good over completed for team Bava. A wicket as well as only 4 runs conceded from Ramesh. In total 6 runs came. In total 6 runs came from this over. Over number 8 which is completed. Now the penultimate over which is going to begin. The last wicket which is having in the hands of United Padubidri. So the bowling starting from the far end. Oh, swings and this time run out would I think umpire has given it out. And batting team United Padubidri, they haven't got any review to take. So in the form of leg before wicket, wicket which is falling. So in the form of leg before wicket, wicket which is falling, the main umpire Muzammil Alakote straight away lifted his finger and wicket is down. So team Saskco United Padubidri, they are all bundled out for just 40 runs and 41. Little bit corrections here. It's 39 on the board. In fact, 40 is going to be the target. I think one of the lowest targets.
So changes here in the commentary box. Once again, the national language Hindi is going to shine here. I heartily welcome Star Nawaz sir for the final time in this day number 3 of United Cricket League. Over to Star Nawaz sir. तो चलिए आखिरी मैच के आखिरी इनिंग्स अब शुरुआत होने जा रहे हैं। टीम बावा सूरतकल और उसी तरह से सैस्को यूनाइटेड पड़बिद्री इस श्रृंखला के सबसे छोटे रन आरंभिक इनिंग्स पर सबसे छोटे रन बनाए हैं 39 बनाकर 40 के लक्ष्य, हर ओवर पर 4 रन के अवसर। लेकिन टीम बावा के लिए पिछले मैच पर हार के साथों साथ जो रन धारण उन्हें मिले हैं उसे बूस्ट करने के लिए इस मैच में जो मौका आपके पास है, छोटी गेंदों पर तुरंत रन पूरा करते हुए रन धारण पर अपने आप को टिकाना, क्योंकि आप जानते हैं अपने अपने विभाग पर अगर अंकों की संख्या बराबर हो टीमों के बीच तब रन धारण के आधार पर आगे बढ़ने वाले टीम तय किए जाते हैं। तो कभी कभी वो एक छोटी सी एक रन पर होने वाले बदलावन भी आपने देखे हैं। तो आइए अब देखते हैं 40 रन के लक्ष्य यूसीएल कम्युनिटी फेस्ट 2026 2026 के सबसे बेहतर प्रतियोगिता कहा तो भी गलत नहीं। लगातार 7 दिन बिना रुके मनोरंजन हर विभाग के लोगों को परिवार के साथ आकर इस श्रृंखला के इस प्रतियोगिता के हर एक हिस्से को देखते हुए आनंद उठाने की मौका यहां पर यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन ने आपके सामने रखे हैं। पहली गेंद और ये खतरा बन सकते थे। आराफत और अनीस पड़बिद्रे आइकॉन खिलाड़ी हैं। अनीस आराफत स्ट्राइक पर टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, सक्षम प्लेयर हैं और इस बार लेग से बाहर। लगातार दोनों गेंद वाइड के रूप लेते हुए सैस्को यूनाइटेड पड़बिद्री शायद आप भूल गए हैं कि आपने बल्लेबाजी में केवल 39 बनाए हैं। तो ऐसे में इस तरह की खराब शुरुआत आपको और भी कमजोर कर देंगे। और छोटे रन बनाए, खराब लाइन की शुरुआत दिखाए, विकेट की मौका गवाए। तो जाहिर सी बात कि आपके दिल और दिमाग पर आप यह तय कर चुके हैं कि आप हार चुके हैं, वरना छोटे रन क्यों ना हो। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट भी आपने देखे हैं, 50 ओवरीय मैच पर छोटे रन पर समाप्त होने वाले इनिंग्स देखे हैं और उसको भी रोकने के साहस कई टीमों ने किया है। इसी बात को अगर पलटकर अंडरआर्म के जानकारी के साथ हम कह दें कि सबसे अग्र क्रमांक के यंग फ्रेंड्स उर्वा टीम 30 ओवरीय मैच पर केवल 9 रन पर ऑल आउट हुए थे उर्वा के मैदान में।
और आज की ताजा खबर, 30 ओवर की मैच पर 71 रन के लक्ष्य थे टॉर्पेडोज गाला को केएफसी कोडिकल के खिलाफ, लेकिन 42 रन पर पूरे के पूरे 10 विकेट क्रैश हो गए। और ये क्या शानदार छक्का! अनीस पड़बिद्रे। अब लोगों के दिमाग पर जो सवाल थे कि अनीस पड़बिद्रे को आइकॉन खिलाड़ी के रूप पर टीम बाबा सूरतकल खरीदने की वजह क्या है, तो वजह यह है उनकी क्वालिटी, काबिलियत। चाहे कितने भी प्रेशर डालने की कोशिश आप करें, $4,60,000 में खरीदे गए हैं अनीस को। यह एक अच्छी रकम है। तो आप समझ सकते हैं कि एक खिलाड़ी को अगर टीम के मालिक 4,60,000 में खरीदते हैं तो उन पर वो डिजर्व करते हैं उस अमाउंट को। नौ रन आरंभिक ओवर के 2 गेंद बाकी, 40 रन के लक्ष्य। और इस बार अनीस स्क्वायर लेग की ओर शुरुआत में ही देख रहे थे कि खाली पड़े हैं जगह, कि एक बार भर के दिखा दूं, लेकिन पिछली गेंद की कोशिश नाकामयाब। टीम बाबा सूरतकल कबड्डी, वॉलीबॉल और क्रिकेट तीनों विभाग पर अपने फ्रेंचाइजी खरीदे हैं मोहिद्दीन बाबा ने। राइट आर्म ओवर से ये गेंद इस बार टॉप एज, विकेट कीपर के हाथ पर। अब कोई गलती नहीं, अनीस की पारी समाप्त। पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या कुल मिलाकर 9 रन। अनीस के विकेट गिरने के बाद अब आफत के साथ जुड़ रहे हैं टीम बाबा सूरतकल के खिलाड़ी। तीसरे क्रमांक पर देखना होगा कि कप्तान किसे भेजते हैं मैदान में। पैराडाइज कृष्णापुरा के महारथियों की मौजूदगी हमेशा, जहां पर मोहिद्दीन बाबा जी की टीम आप देखते हैं, चाहे वो कितने दूरी पर क्यों ना हो, चिन्नस्वामी स्टेडियम में हो, वानखेड़े स्टेडियम में हो या ईडन गार्डन्स में, पैराडाइज के लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। पैराडाइज संस्था के लंबे समय के अध्यक्ष मोहिद्दीन बाबा के हर एक सोच विचार के साथ सहमत दिखाते हैं, समर्थन करते हैं पैराडाइज। अबू बकर हो, मुस्बा हो, रहीम, हमीद, रियाज, फिरोज, अजीज, लंबी लाइनअप खड़े हो जाएंगे नामों के। और पैराडाइज एक ऐसी संस्था है, 45 साल के तजुर्बे के साथों साथ अंडरआर्म क्रिकेट ही नहीं बल्कि इस समाज के सुधारण वाली बातों पर भी लंबे इतिहास है। बड़ी सी साधना है पैराडाइज संस्था के। और इस वजह से ही कृष्णापुर के वो शाला के मैदान को पिछले 40 सालों से पैराडाइज ग्राउंड के नाम से पुकारे जाते हैं। अगर किसी से आप कृष्णापुर के स्कूल के मैदान के बारे में अगर पता पूछेंगे तो जवाब नहीं मिलेंगे आपको। बस पूछ लो कि पैराडाइज मैदान कहां है, ठीक ठाक बिल्कुल साफ सफाई के साथ आपको जगह पहुंचा देंगे। स्क्वायर लेग की ओर मोड़े और गेंद आगे बढ़ रहे हैं सीमारेखा की ओर, लेकिन बाउंड्री के अंदर ही गेंद को रोके। 2 रन आसानी से, कोई दबाव नहीं। बड़े बड़े प्रतियोगिता फ्लडलाइट के क्रिकेट श्रृंखलाएं बनाने की पैराडाइज के साधनाएं, और पिछली बार उन्होंने एक विभिन्न प्रयोग किए हैं अबू बकर और मुस्बा पैराडाइज ने अंडर 19 क्रिकेट श्रृंखला बनाकर। यह अवश्य है, हर गांव पर होना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह से आप देख रहे हैं, चाहे वो अंडरआर्म क्रिकेट हो या ओवरआर्म क्रिकेट, हर गांव के बड़े बड़े महारथियां जो क्रिकेट को प्रोत्साहन करते हैं, टीम खरीदने के बाद या किसी प्रतियोगिता में टीम दाखिल करने के समय पर
केवल नाम वही पुराना दिखते हैं, लेकिन खिलाड़ियां नए। दूर दूर से खिलाड़ियों को बुलाकर अपनी टीम पर खेलने पर लगा देते हैं। मैं कहता हूं ये गलत है। अपने गांव के छोटे छोटे प्रतिभाओं को आप मौका देंगे, तब जाकर वो आने वाले दिनों पर आपकी टीम को मजबूत करेंगे। रन आउट की अपील, अच्छी फील्डिंग, और जिस एंगल पर गेंद को उठाए हैं फील्डर, वहां से विकेट को जब वो देख रहे थे तो सिंगल स्टंप नजर आ रहे थे। तो ये अच्छी अच्छी रन आउट की कोशिश कहने होंगे। दूसरी ओवर के प्रगति पर अब रनों की संख्या देखना है कि इस रन आउट के निर्धार क्या निकल आते हैं। कुल मिलाकर 12 टीम क्रिकेट पर मुकाबला लड़ेंगे। व्हाइट स्टोन वॉरियर्स, यूटी फरीद वॉरियर्स, किंग्स पुत्तूर, पुत्तूर पर्ल्स, बलाटा स्ट्राइकर्स उडुपी, बलाटा स्ट्राइकर्स सुरलिया, यूनाइटेड सैस्को यूनाइटेड पड़बिद्री, ब्राइट ओएसिस, कापू चैलेंजर्स। कई सारी टीमों की मौजूदगी आपने देखे हैं। और शुरुआत से लेकर अब तक बिना रुके 10 ओवर के एक परिपूर्ण क्रिकेट की पेशकश आप देख रहे हैं। और खेलने के बाद खिलाड़ियां गलतियों को किसी और के ऊपर दिखाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर साफ नजर आते हैं किन किन की गलतियां हैं, किन के पास अच्छे पन निकल आए हैं। 360 डिग्री वाली ये मैदान, लंबे सालों के इतिहास भी है। दरिया किनारे उल्लाल के सौंदर्य बढ़ाने वाली ये समुंदर की किनारे, और ऐसे माहौल में तो काफी कम देखने को मिलेंगे। विदेश पर जब आप अंतरराष्ट्रीय मैच देखते हैं तो ड्रोन कैमरा के जरिए उस पूरे एरिया को जिस तरह से अपने कैमरा पर कैद करते हुए टीवी माध्यम दिखाते हैं, आजकल तो हमारे बेद्रा मीडिया उससे भी कहीं आगे निकल गए। चांद को इतनी नजदीकी से दिखाने लगे हैं और ऊंचाई इतनी बढ़कर ग्राउंड को दिखाते हैं कि जिस तरह से बाह्याकाश पर नासा फोटो छपकर बेचते हैं जमीन पर। तो ये सब खूबियां आप लोगों के प्रोत्साहन की वजह से। 1,60,000 सब्सक्राइबर्स, क्या आसान बात है। देश विदेशों में लाइव टेलीकास्ट के अनुभव, सऊदी अरेबिया, इलाइट कप, हम भी साथ में थे, दुबई हो और देश के कोने कोने में, मुंबई नगरी हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, हैदराबाद हो, बेद्रा मीडिया तो पूरे जांच लिए हैं देश के कोने कोने में। और वो जांचना ही, वो तजुर्बा, वो अनुभव ही उनकी हर प्रगति के लिए सहायता मिले हैं। अनुभव से बेहतर शिक्षा बिल्कुल दूजा कोई नहीं। और इस बार भी सिंगल रन। बाईस रन, 22। हनीफ के आखिरी गेंद बाकी, केवल 18 रन पीछे खड़े हैं। और कल के दिन जो पहले मैच खेलने वाले दोनों टीम हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक 10 बजे पहले मैच होंगे आपके लिए। और उससे पहले ही 15 मिनट पहले ही सिग्नेचर आप दाखिल कीजिएगा। टुमारो मॉर्निंग एग्जैक्ट 10 AM फर्स्ट मैच विल बी प्लेड। सो दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद अब रनों की संख्या 23 रन, 23 on the board after the completion of second over. 17 more runs to win this match. टीम बाबा सूरतकल और सैस्को यूनाइटेड के बीच ये मैच। एक अंतरराष्ट्रीय सेटअप, दर्शक काफी खुशी महसूस कर रहे हैं यहां पर जुड़ने के बाद। मैच देखने के लिए उनको दिए हुए व्यवस्थाएं और यहां पर आने के बाद उनके मनपसंद भोजन स्वीकार करने के लिए कई संख्या के फूड स्टॉल्स, बच्चों के लिए उनके मनोरंजन वाले कई सारे विभाग,
कबड्डी के प्रेमियों के लिए कबड्डी के वो संघर्ष भरे मुकाबला, और अब 31 तारीख को वॉलीबॉल प्रेमियों के लिए ये माहौल और भी सौंदर्य बढ़ाकर उन्हें दिखाएंगे। और 1 तारीख को होगा आखिरी दिन। इन 7 दिन के हर विचारों को अंजाम देने के दिन यूनाइटेड एम्पावरमेंट एसोसिएशन के जितने भी योजनाएं हैं, जिन उद्देश्य के साथ बड़े बड़े हस्तियों के प्रोत्साहन लेते हुए व्हाइट स्टोन शरीफ बोलार जैसे महारथियां, अल मुजैन के जकारिया जोकट्टे जैसे महारथियां, एक्सपर्टाइज के शेख बाई जैसे बड़े बड़े महारथियों के संयोग मिले हैं, उनके प्रोत्साहन मिले हैं। तो ऐसे में सक्सेस नाम की चीज वाकई मुस्कुराकर सामने आकर खड़े रुके हैं। आराफत के विकेट कॉट बिहाइंड के रूप पर गंवाने के बाद टीम बाबा सूरतकल अपने दूसरे विकेट गंवाए हैं। तो अब रमीज के साथ जुड़ते हुए नए खिलाड़ी सैफुल्ला, और बचे हुए छोटी सी रन जो अब बाकी पड़े हैं टीम बाबा के लिए, उस रन बनाने की वो हर एक क्षण को रशीद संकोली अपने शब्दों में बयान करेंगे। इट्स ओवर टू रशीद संकोली। थैंक यू। So thank you, Star Nawaz sir. And in the meanwhile, what a stroke that is. Very, very impressive. Just a sheer timing. Rami is the man. And a classy way to collect a boundary into the covers region. So with that boundary, scoreboard is having a 28 on the board. So 28 runs. They're chasing only. So just 12 required, 40 which is they're chasing. And in the meantime, I think one more run which is coming into the scoreboard. So two of the umpires who are doing a great job, as well as we got the third umpire here in the commentary box, Marzouk. And also we have one more umpire who has done a great job today as well as yesterday, Kareem. Oh, good delivery there from the bowler. Even though it's just the formalities now. It's just that only if the wicket switch is falling, then only that the team United Paduvidri can make a comeback in this game. Or else it's almost formalities for team Bava to chase down the total. Because you can look at the screen as well. 11 required from 42 deliveries. Just the 11 runs which is required from 42 balls. So 29 on the board. 3 overs which is completed. 3 overs, the power play completed.
And for this wonderful United Cricket League, Hana Beverages have become the official beverage partners. And they've also put a wonderful stall. So Tamsir brought into the attack from the commentary box end. So 42 balls, 11 required for the victory for Team Bava. Oh, he did that one. Sweet sound came from the bat. What a contact. Straight away is straight like an arrow into that long off region. You can look at in the replay. So that maximum is going to take the scoreboard moving on to 35. Now just 5 required from 41 deliveries. Oh, ball the extra quicker one is trying to short pitch the delivery. Almost trying to bowl that bouncer. Oh, struck that one, stepped out of his crease, and it's into the commentary box. One more biggie to finish the match in style. Team Bava, they're registering their first victory in this Whitestone United Cricket League. They are opening their points table with this victory. And on the other hand, after playing their very first game, team Saskco United Paduvidri, they are going to be a little bit disappointed, especially getting a match in the floodlight and having a lot of difficulty.